Welcome to part 2 of my storytime series talking about how I got addicted to every substance ever. But I actually talk about downers, okay? Uppers have never been my thing. I've tried a few over the years, but no, I'm already so. I need something to calm me down. And another thing, if the first few minutes of this don't feel like there's that pizzazz of story time, that's because I'm feeling really nervous. Because when I filmed the first part, the other day late at night, I expected like 11 people to tune in, but a decent amount of people have watched it now, and I don't know why that's just making me nervous. And whenever you notice yourself procrastinating because of nervousness, because just nervousness is good, it's nice, it motivates you to do better. But when you're like procrastinating, like I could have shot this 2 days ago, but I also had this blister क्योंकि यार छोटा हो गया थोड़ा प्लूटो का साइज का हो गया, but I had this blister and it became as big as Jupiter. So that was one of the factors, but it got better like day before yesterday. So I could have shot this last night, but I didn't because I was getting nervous. So the first few minutes I'm just going to attempt making this music video. Is it music video in shorts? No, this story time video. And then eventually Shalu will kick in, which I think has already started happening. But hello, welcome back. If you haven't watched part one, go and watch part one because this will not make sense without that. And before we start again, I have two disclaimers. First, while I want to reserve all of my analysis of why I did the substances I did, why I made certain choices I made, for the third part of the story time, like once the retelling of the story is done, I want to then jump into analysis and tell you guys कब क्या हुआ. Although मैं बीच बीच में भी sprinkle करती रहूँगी, but I do feel the need to say this one thing because now we'll start with like mentions of a lot of substances. If you're under 20 or like 22 years of age and I see you doing this stuff, there is a very high chance that I will tell your mother. I will find your mother and I will tell her because I don't think your brain is not developed by 22. I don't think it just does not sit well with me. So yeah, please don't think that like you can come and ask me where you can find stuff, certain things. Please don't think that you like I will offer you a joint. Like that's not happening if you're under 22. Okay? Over 22, I just have one thing to say. You're a full, not a full blown adult, because now I look back at 22-year-olds and I'm like, baby. But if you're 22 or above, or any age above 22, and you're doing these things, there is some pain somewhere. And I know that, so appealing, right? What a quick fix. I can just take this Zen and like life feels great. Wow. But after having done it for a while, all I can tell you is that it doesn't actually fix anything. A lot of people are smart. I know you know this already, but yeah, it doesn't actually fix a lot. And in any case, like I feel like if anything, it just makes things worse sometimes. Again, I'm not saying drugs are bad because, as you'll know in part 3 later, it has also helped me in life. But no, it's not worth it. If it's for, I don't know, it's just if you're self-medicating, let's put it that way. Actually, do we really believe in doctors? Again, something that we will figure out together, because my brain, I feel like, has changed completely over the last few years. So I'll leave my analysis of whether drugs are bad to part 3, good or bad to part 3. But until then, if you're under 22, I will not tolerate this behavior. And if you have to get influenced by one thing, I say, पूरी जिंदगी में एक बात चालू की अगर है, is this that like don't get into substances. It's not a fix. It's not an effective fix. There's no good or bad. It is not the most effective fix. That's what I'll leave you with. That said, 4 minutes already. Let's start with this story time. Oh, another disclaimer as the first part, taking full responsibility for everything that happened to me. I feel gratitude for a lot of the things that I went through. I was an absolute willing participant, in fact, an instigator of a lot of the things that I did, a lot of the substances I did, all of that stuff. So, you know, 100 किसी के बारे में मैं अगर बोलूँ और अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये blame, nobody except me, myself and I. All right, let's begin. So, at the start of 2022,
I'm in Noida and I am unemployed because I rage quit my job last week in December while I was in Himachal. Okay, and I'm unemployed, new house. I do not fuck with the house. I'm very sad because of how the whole last year has gone and actually the whole life has gone. ठीक है, ऐसा मत सोचना कि लाइक बहुत ही दुख दर्द भरी जिंदगी थी. I don't think that's the case anymore. I was just too sensitive to everything that was going on. Okay, so whatever. I'm just a sad girl in the beginning of 2022, super sad. And by this time, I've promised myself that I'm not gonna let myself be sad. So, my goal in the beginning months of actually throughout 2022 was to stay sedated because I had realized that if I stay sedated, meaning if I stay high all the time, I don't feel as much pain because I can no matter what BT, because like कई लोगों का ऐसा होता है like if you're having a BT in life generally, smoking up kind of amplifies that. Different substances work very differently for people. Okay, don't ever fall for anybody telling you that this is a definite thing about a definite thing. Nothing is ever definite. कहीं और ही चले गए हम. But I have this ability to just feel euphoria when I'm high. Okay, no matter what is going on. Touch wood, I don't think I've ever had a BT. Touch wood. Actually, I don't know. But yeah, मुझे से generally, मतलब it was not a life altering BT at least. I've always thoroughly enjoyed everything I've ever done. So yeah, in the beginning months of 2022, when I moved to Noida, I am now going out every day, all day, every day. I also don't have a job, so with whoever I can, whenever I can, former colleagues throwing parties, people I found on Reddit, I'm going to the house and smoking up, people I met on Bumble type shit, unko bhai bana ke, I'm like rolling for them. By this time, I roll thick joints, okay? So, and while I've personally never enjoyed alcohol, during these few months of my life, like the initial, all of 2022, again, let's not say initial, but especially the initial, because then in later in the year, I started on, I started getting on like a different cocktail of things. So alcohol became less frequent. But in the beginning, like, I'm always high, always 24/7. And if I'm out and somebody's got a beer or something, like I'll just drink it. Or like those little क्या पीती थी मैं पता नहीं जो भी मिल जाता था मैं पी लेती थी और फूक लेती थी ठीक है the initial months of 2022 and I'm going out all the time with anybody anybody I could find who wanted to smoke up. I was out with them smoking up. Okay, so this was happening. Then in the mid of January or something, while this is simultaneously happening, I also start to realize, okay, you know what, I need to get a job because not a lot of people know this. After I turned 18, I barely have taken any money from my father. In fact, I paid around 25K to stay in their house, and I was doing that back then also. I think that back then is when it probably began, maybe 6 months before that, aisa kuch to, I had just started paying rent at home. I also don't think my dad definitely didn't ask for it. If my mother even did ask for it, I think it was more like, okay, I'm gonna take this money and save it for her. Not like rent do हमारे घर पे rent, not at all. It was an ego thing for me though. I was like, अगर मैं rent pay करूँगी तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ. तब कोई मुझे कुछ बोलेगा तो फिर मैं बोलूँगी हाँ तो but मैं rent pay करती हूँ ना, what the fuck, you know, some dumb shit. I don't know what happened. But yes, so by this time I'm also paying 25,000 something for rent at home. Rent and electricity, and I used to pay the domestic helper, stuff like that. जो भी 25 बनता था ठीक है. So in mid-January 2022, I'm like, okay, if I need to keep up with that dabdaba at home, I also need to get a job. Because by that time, I didn't have a lot in savings. I had like what, 5.5 in savings, ठीक है, lakhs, not crores. यहाँ पे लोग अलग ही लेवल के पैसे कमा रहे हैं, lakhs ही थे मेरे पास तब. ये 5-5.5 लाख है मेरे पास सब जनवरी में, जो लास्ट 2.5 years ऑफ जॉब में सेव किया है. ठीक है, तो जैन में मैं जॉब ढूंढना शुरू करती हूँ. साइमल्टेनियसली नशे चल रहे हैं बढ़िया. ठीक है, and then after only looking for maybe like I don't know 15-20 days, by end of Jan, first week of Feb, I get a job. Now this was a fun job. Now that I look back at it, it's sad that I did it for such a short period of time.
But this was essentially a company. Okay, let me not give you any details except the fact that PewDiePie Felix was my team's client. Mr. Beast was our client. I think they went separate after that. Couple of these Patrick Star, couple of these were really big create. It was a creator-based company. Okay, super fun idea wise. मेरा जॉब मुझे इतना फन नहीं लगता था, but the people around me used to do it with so much passion. And I think if I was sober, I might have done a better job. You gotta admit to the shit you've done, dude. This is one of the shit. Like, I feel like I was not giving my 100%. And something in me just like hates myself when I'm not giving my 100%. तो वो भी simultaneously चल रहा था picture में. But in any case, in the first week of February, I started working with this. This was a French company, okay, headquartered in Paris. Yes, Paris. So no physical office in India, none, fully remote. Now that did not help my delinquent tendencies anymore, did it now? Because what, बढ़िया से लैपटॉप पकड़ा दिया है, वो एलीट कोवर्क को क्या है वो वीवर्क, हाँ वीवर्क का एक एलीट कार्ड पकड़ा दिया था, तो चोरी हो गया यार, सैड, लेटर इन लाइफ चोरी हो गया, बट कोई बात नहीं, ठीक है. उसमें लाइक थ्रू आउट द, जैसे कल्ट का सबसे एलीट होता है ना कि आप इंडिया में कहीं भी कोई भी कल्ट जा सकते हो, वैसे ही वीवर्क का भी एक एलीट टियर होता है जिसका मैंने कोई यूज़ नहीं किया. मैं शायद ज़िंदगी में पूरा मिला के 4 बार गई होंगी. सो सैड. बट वो हम लोगों को सबको एक एक पकड़ दिया था, इंडियन एम्प्लॉयज़ को पकड़ा दिया था, इंडियन एम्प्लॉयज़ को. एंड वी वर रियली नॉट दैट मैनी इन नंबर ऑल्सो. आई थिंक इन ऑल ऑफ इंडिया दे हैड मे बी 40 एम्प्लॉयज़ और समथिंग लाइक दैट. सो वो जॉब भी चल रहा है. इट वॉज अ टारगेट बेस्ड position, okay. Like I was supposed to, and it was divided by market. So I was looking at a lot of APAC. I was sourcing creators for APAC, and the market is already saturated. उसके ऊपर चलो anyway job के details में नहीं जाएंगे हम, but I was not enjoying it, okay. मतलब मुझे बचपन से बॉस बनना है, ठीक है, मतलब मैं स्ट्रैटेजी प्लान करूँ, मैं बॉस बनूँ. So a lot of these roles that I've been in life have not allowed for autonomy, and that does not sit well with me for some reason, because I've almost always had not dumb bosses, but like a mix of dumb bosses and bosses afraid to do the work and bosses afraid to speak up in rooms, and I'm completely opposite of that. So being in such roles has always like pissed me off. Being high all the time added to that does not help either. But in any case, job okay चल रही है, okay चल रही है. By like March or something, I'm working until 6 p.m. 10 to 6, 10 to 7 ऐसा. Sometimes if I'd have meetings with my French colleagues, so that would happen later in the day, or like the US colleagues, that would happen later in the day. And then I would go out, okay. So like 8 o'clock I would go out. And didn't I tell you like ऐसे अजीब से दोस्त बना लिए मैंने यहाँ नोएडा में, okay. So there was this one group of boys, and I've never like hung out just with boys in my life, okay. This is the first time I'm hanging out with like these 3 boys. They're all older than me, and for some reason it's safe because they think I'm a boy in a very weird way. You know, they think I'm a bhai, and I don't really believe it when other people say it, because what do you mean, men will always, but these, मतलब ये ऐसी ऐसी बातें करते थे मेरे साइड में बैठ के कि ये भूल जाते थे कि मैं हूँ वहाँ पे, ठीक है. और एक बार ऐसे जैसे मार नहीं देते, हाँ 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 ढपैक, ऐसे ढपैक करके एक बार मुझे तेज से मार भी दिया. मैं चिल्ला दी थी. उसमें जब खाना आएगा तो इन सब के लिए 3 रोल आएगा, तो मेरे लिए भी 3 रोल ऑर्डर कर देंगे. मतलब मैं भाई मैं कैसे खाऊंगी 3 रोल. बट कोई नहीं, ऐसे टाइप के लॉन्डों के साथ में हैंग आउट करती थी. सेफ but like after a point I was just like I can't keep up with. हाँ, रात के साढ़े, भाई आ रहा है, नीचे आ रहा है, रात के 12:30 बजे. हम लाइक भाई मैं माँ बाप के साथ रहती हूँ और मैं एक लड़की हूँ ग्रेटर नोएडा में, मैं कैसे आऊँगी अभी बताओ, ठीक है. तो वो ऐसी चीज़, तो इसलिए फिर मेरी उनसे बात होना बंद होगी. बट लाइक फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड आई वाज फ्रेंड्स विद that gang group, not gang group. And yeah, that was fun. कभी कभी तो मैं 11 11:30, अगर 8 बजे अगर मैं निकल गई हूँ घर से, ठीक है, तो फिर मैं 11:30 तक खींच सकती हूँ अगर मैं एरिया में हूँ, तब करती थी मैं ये. अब नाउ आई ट्राई टू गेट होम बाय 10.
because I want to be home by 10. Like I want to be in my bed with my skincare done by 10:30 and asleep by 11. So, but tab to I had to like not think a single thought, wake up, work, not think a single thought, go back to sleep, right? That's the life I was trying to live. So that worked out. That's just a fun little thing I wanted to share. उसके बाद बीच में ऐसा होता है अराउंड ये मार्च वाला टाइम ही when I start posting 420 content. Okay, I've posted a reel or two before, or I've posted like stories while I'm under the influence of, and people can tell. Okay, sometimes, not always. I don't think y'all can always tell. But yeah, I start posting 420 content, and this is when मैंने part one में बोला था that I start this feeling starts creeping in about the fact that I'm missing out on the Instagram audience, or like the Instagram where like the it crowd is at, right? But वो feeling seep in नहीं हुई थी. By this time it's seeped in. It's like dripping on me, okay, this feeling. I can like actually experience it because a lot of the people I was friends with were big on social media. By this time, I don't know why. Actually, I know why. Maybe we'll talk about it later in third part. But I'm also friends with like rappers, and like क्योंकि मैंने बहुत न्यू सुनना भी शुरू किया था. I think 2020 I started listening to Desi rap, which by the way मेरी जो popular friend थी, she introduced me to it. One of the many good things that she did, because wow, I was actually missing out. Like I'm so glad that a lot of this rap came into my life. But then it also went away after a few years. तो हम उसके बारे में बात करेंगे. And only a few artists stayed. But yeah, I'm like I stopped not caring about YouTube, but I stopped feeling like my efforts with YouTube will amount to anything. Bro, it's so crazy that when I was younger, when I had 200 subscribers, I thought it will amount to something. But then now, when I've reached like 11K or something, 11, 12K, I have done dumb things in life, and I've convinced myself that the one good, nice, productive thing, community led thing I had is not worth it. So you can tell like where my brain was at. But yeah, I started posting a lot of 420 content. A lot of these big brands I reached out to, a lot of them reached out to me. So I'm making reels, I'm doing like sponsorship stuff. वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, but हाँ कर लिया था मैंने थोड़ा बहुत. And another part of the reason why I got more and more inclined to Instagram is because I did not have the energy. टाइम तो नहीं कहेंगे because टाइम तो था. I was wasting my time away doing dumb things, but I didn't have the energy to sustain a YouTube career or schedule at that point. Like putting out a long form video takes some mehnat. And I'm not saying that like Instagram does not, short form does not take mehnat. I think doing anything in life, anything, no matter how big or small you may think, requires hard work and consistency. So ऐसा नहीं है, but like in that moment, it's just that making reels was easy, okay? It was quicker for me. I think less effort intensive for me at that point in time. So that's what I started doing. And that's when I started like stepping back from YouTube. ये summer of 2022 की बात हो रही है. And obviously, because now I realize that I'm somebody who enjoys long form, and working on long form, the whole planning, shooting, editing bit is actually cathartic for me. So it did have repercussions for me, but मुझे तब realize नहीं हो रहा था कि मैं इतनी दुखी क्यों हूँ, because I stopped making YouTube videos. And it's not about YouTube videos. It's a metaphor. YouTube is a metaphor for the things I want in life and the things that make me happy. Okay, समझ गए तो comment ज़रूर करना. But like patience, planning, being disciplined enough to hold myself accountable to हाँ आज इस दिन बोला था शूट करूँगी, इस दिन शूट करूँगी, इस दिन डालूंगी. All of that went missing when I stopped posting YouTube videos. So YouTube is a metaphor for a lot of other like life virtues that aligns with my soul that I just disregarded because I was in pain and I was high. So I stopped. Also ऐसा होता है कि 2022 के एंड में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, या 2022 के स्टार्टिंग में मैंने कोई तो एक वीडियो पोस्ट किया था, उसके एनालिटिक्स का स्क्रीनशॉट मिला मुझे. And it was like some 800 rupees for that video. And by this time, I'm like really used to
मेकिंग नॉट बिग bucks, because क्या ही मतलब 12,000 सब्सक्राइबर्स में क्या ही, but that was very low compared to what I was making per video. Like that was like, that just made me feel like, wow, everything's down. Views are down, watch hour is down, money revenue is down, everything's down. So that was another L that led me to being like, fuck it, नहीं बनाना है मुझे, let me just focus on working and being high, and maybe Instagram. Okay, stupid. But ऐसे ऐसे मेरा समझ जाता है, the whole time I'm still crying, I'm still every single day without fail, I am crying a lot and wanting to not be here anymore. Okay, but I never actually attempted anything, I feel like, because मुझे मेरे माँ बाप की शक्ल याद आ जाती थी हमेशा, and I would like think practically so that I don't cry more, which was like, oh, by that time they didn't know how to book an Uber, and now they know, now they go everywhere. So like a while ago I was like, wait, so now they know how to book an Uber, should I like leave now? Stupid. But yeah, I just used to see my parents face and I was like, I cannot die right now, later maybe, अभी तो नहीं कर सकती. So कहाँ पहुँच गई मैं, हाँ, so I'm like genuinely sad, I'm very sad, like दस क्रेसेंडो अभी पहुँचे नहीं हैं हम वहाँ पे, ठीक है, बढ़ रहा है, सैडनेस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बट बाहर की दुनिया को बहुत वो लग रहा है. मे बी नॉट माई पेरेंट्स, बिकॉज दे सी मी गेटिंग हाई एवरी डे, एंड माई मॉम एक्चुअली कन्फ्रंटेड मी, ओके, इन द बिगिनिंग ऑफ 2022. शी इज लाइक, एक बार कुछ तो मैं उनके रूम में गई थी तफरी करने या समथिंग लाइक दैट, एंड शी इज लाइक, हे, and I went and she's like, you smoke cigarettes, right? I'm like, no, no, I don't, because I don't. I really don't. Okay, BD? Sure. Jew? Sure. What? Cigarettes? No. So she's like, कसम खाओ. फिर मैंने खा ली कसम, क्योंकि सही है, सच बात है, सिगरेट तो नहीं पीती हूँ मैं, ठीक है, और ना ही तो खरीदी है मैंने 2021 से, समथिंग लाइक दैट. एक मन्नत मांगी थी मैंने, उसके बारे में बताऊंगी कभी और, ठीक है. तो आई वाज लाइक, cigarette nahi peeti hu. And then she asks me point blank, she's like, what about tum peeti ho? And I was like, for a few seconds in my brain I was like, क्या बोलूं. फिर मैंने सोचा सच ही बोल देते हैं, झूठ बोल के क्या ही मिला इंसान को आज तक. तो फिर मैंने बोल दिया हाँ. फिर माई मदर वाज लाइक, इससे लाइफ खराब होती है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा. और मेरे दिमाग में ऐसा चलता है कि जब तक आप बच्चे नहीं बेच रहे हो या बच्चों को कोई सब्सटेंस नहीं बेच रहे हो, it's okay in my books, because a lot of these like CEOs and like rich people you see with clean public images, they now we know, okay, so like looks से आप कुछ नहीं बता सकते किसी का क्या है. ये सारे IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे वाले जो लौंडे हैं, मैं ज़मीर नाम की एक चीज़, सारे नहीं, ठीक है, पर हम मानते हैं ना कि अरे IIT दिल्ली का लड़का तो मतलब बहुत ही एथिकली प्रिंसिपल्ड, मॉरली करेक्ट होगा, क्योंकि वही एक प्रॉब्लम, मॉरली करेक्ट क्या होता है हमें नहीं पता है. बट इन एनी केस मेरा थोड़ा एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट थोड़ा सा अजीब है आई थिंक, और वो मैं एनीवे उसके बारे में नहीं जाएंगे, बट हाँ मैंने बोल दिया कि मैं ऐसा करती हूँ. सो फैमिली लाइफ में थोड़ा सा टेंशन शुरू हो चुका है, बिकॉज एवरी नाइट दे कैन स्मेल इट in my room, okay, and my mother has now confronted me and I'm not even bothered to lie. I'm like, yep, yes, now what. इतने तान के नहीं बोला था शायद मैंने, बट आज तक हाँ ठीक है. फिर आ गई थी रूम में, ऐसे वहाँ पे खड़े होकर मैं डिबेट नहीं कर रही थी, बट बता दिया था मैंने. तो फैमिली लाइफ में ऑलरेडी टेंशन 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 शुरू हो चुकी है, ठीक है, कोई बात नहीं. अब जॉब चल रही है, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है इतना कुछ खास. फिर आई थिंक इन अराउंड मे और समथिंग, माई कॉलेज बेस्ट फ्रेंड, लव यू बेबी, शी सेड दैट हिमाचल चलते हैं, ठीक है. और हमारी मतलब आई थिंक म्यूचुअली डिसाइड हुआ था कि चलते हैं, बिकॉज शी ऑल्सो हैडंट गॉन, शी इज ऑल्सो बिग टाइम माउंटेन लवर, आई एम ऑल्सो बिग टाइम माउंटेन लवर. और मैं वैसे ही, मुझे विड्रॉल सिम्टम्स होने इतने ज़्यादा, क्योंकि 4-5 महीने से मैंने पहाड़ नहीं देखे हैं नोएडा शिफ्ट होने के बाद. सो आई वाज लाइक ठीक है चलते हैं. तो वी डिसाइडेड टू गो टू जिबी. नाउ दिस ट्रिप आई एक्चुअली एंडेड अप व्लॉगिंग. Super fun trip. It was so fun. Her and I had so much fun. It was just her and I, and I think Jibi was quiet enough at that point. The commercialization had already begun because बहुत सारे cafes का construction हमने देखा, but मैक्लोडगंज के comparison में
कोई गुड बैड नहीं बोल रही हूँ मैं, बट मैं बस बोल रही हूँ थोड़ा क्वाइटर ट्रिप था और फन भी था। हम लोग आधे से ज़्यादा मतलब जहाँ भी हाइकिंग वगैरह जाते थे दिन में वो सब करते थे, फिर उसके बाद शाम में हम लोग रूम में आके बालकनी में बैठ के चौपड़ चौपड़ करते थे। तो सुपर फन यार। अब उसकी शादी हो गई है तो मुझे अब थोड़ा खींच खांच के उसको लेने में मेहनत लगती है, बट लेट्स प्लान समथिंग। बट या, फन ट्रिप, vlogged it also. And now I'm back after, oh no, इस ट्रिप में मैं जिबी के अलावा फिर वो आ गई थी, फिर मैं शायद 4 दिन या 5 दिन और रुक के आई थी, ज़्यादा नहीं 4-5 दिन, तो टोटल लाइक 2 हफ्ते की ट्रिप हो गई है। उस 4-5 दिन में उसके साथ हम जिबी गए थे, फिर मैं और बीर भी गए थे लाइक 2 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, 2 या 3 दिन के, 2 दिन के लिए शायद हम बीर गए थे। उसके बाद वो आ गई, फिर मैं थोड़े टाइम ओल्ड मनाली गई थी। ठीक है, कोई नहीं, बढ़िया थी ट्रिप, वहाँ पे मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिले, दैट वाज आल्सो फन। Post that, I come back to Delhi, and that same wave of sadness hits. But I think I'm less sad than, I mean, I'm still a sad gal, but I'm less like I want to like die this time, okay? But अब मुझे genuinely नहीं याद है क्या हुआ था, but मुझे याद है कि the first week of me being back from Himachal, my mother and I are in the metro, और कुछ तो बात चल रही है, ठीक है, about me adopting a human child when I'm 28, so like this age, no this age, okay, so थोड़ा प्रेफर like थोड़ा मैं आपको बताती हूँ बैकग्राउंड, ठीक है। पता नहीं क्यों और कब, मुझे नहीं याद है ये बात, पर उसी साल की बात है, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई पेरेंट्स वेरी सीरियसली अबाउट अडॉप्टिंग अ ह्यूमन चाइल्ड, ओके, बिकॉज ह्यूमन चाइल्ड, ये सब तो चाइल्ड है ना, क्या ये पिग का बच्चा, लिजर्ड का बच्चा, सब चाइल्ड ही है, वो आपको बस दिखते लगे, सब चाइल्ड है, प्योर एनर्जी है, तुम भी और मैं भी एक्चुअली प्योर एनर्जी ही है, बट ठीक है, बहुत बोलती हूँ मैं, खुद करती हूँ ये रियलाइज, कभी कभी भूल जाती हूँ मैं, गुस्सा हो जाती हूँ खुद से, कोई बात नहीं। तो मैं आई started talking a lot. At that point, how old am I? 24 maybe? 24 years old, 23, 24 years old, okay? I start talking about how Papa listen to my game plan, okay? 28 तक मैं बहुत पैसा कमाऊंगी, नेक्स्ट 4 years में बहुत पैसा कमाऊंगी, ठीक है? कहती ठीक है। मैंने बोला उसका 28 में मैं अडॉप्शन के लिए फाइल करूँगी, पेपर डालूंगी, क्योंकि मैंने कहीं तो सुना था, मुझे याद नहीं है, कि to adopt a child, like the average time, the whole process, also if you can hear drilling, I'm so sorry, they're like rebuilding, not rebuild, they're doing something, not in my house, the house beside me, anyway, कहाँ थी मैं, हाँ, 4 साल पैसे कमाऊंगी खूब ज़्यादा। हाँ, मैंने कहीं सुना था कि इंडिया में लीगली अडॉप्ट करने के लिए एवरेज ड्यूरेशन 4 साल होता है, 4 साल तो लग ही जाते हैं आपका, सब पेपर डालो, चेक्स होंगे, रिश्वत दोगे, बच्चा मिलेगा, फिर बच्चा आएगा, ये सब होते होते आपको 4 साल लग जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैं 28 में अडॉप्शन पेपर्स डाल दूँ तो 32 तक आई हैव अ बेबी, एंड तब तक पता नहीं क्या हो गया था, बट आई वाज लाइक, मतलब मुझे पता है क्या हो गया था, बट आई वाज लाइक फक दे शेड, नहीं करना है किसी आदमी को डेट, और हम अपना रहेंगे बढ़िया, मैं और मेरा छोटा सा बच्चा या बच्ची या व्हाटएवर, ठीक है। तो ये पता नहीं क्यों मैं 50, आई डोंट नो, इट्स सो वियर्ड, आई थिंक आई wanted to be taken care of, so I was like, I'm going to take care of something. I still don't know how that adds up, I don't know the psychology behind it, I don't know, but started having this discussion a lot at home. मतलब not a lot, but I've definitely mentioned it at least 4 times, okay? To the point, ये बात कभी मेरे माँ बाप की हुई नहीं है, but I feel like they got scared, okay, what is wrong with her, ठीक है? Or maybe they just saw me getting high every day and were like, this, something is up. तो उस दिन हम मेट्रो में खड़े हैं, ठीक है, ऐसी ऐसी बहुत बार मैं घर पे ब्रिंग अप कर चुकी हूँ ह्यूमन अडॉप्शन के बारे में बात, and then mind you, I am 23 by this time, and all the last 23 years have gone by me telling my parents I want a dog and them saying no, straight up no, it was just a no, okay? And then उस दिन I'm just like, I don't know why I bring it up again, I'm like, तो फिर मैं डॉग अडॉप्ट कर लूँ क्या? पता नहीं क्यों बोला मैंने, क्योंकि मुझे हाँ, कुछ तो फिर से ऐसी ह्यूमन अडॉप्शन के बारे में बात हो रही थी, ठीक है, मैं अपनी मम्मी से बोल रही थी ऐसे कर लूँगी, वैसे कर लूँगी, मैं वैसे कर लूँगी, लेकिन उससे पहले डॉग अडॉप्ट कर लूँ क्या? फिर तब मेरी मम्मी ने शायद बोल दिया समथिंग लाइक, हाँ, पहले तो डॉग अडॉप्ट करके देखना चाहिए तुमको, वेदर यू कैन टेक केयर। हाँ, मैंने बोला आर यू सीरियस? कहती हाँ। मैंने बोला पक्का, फिर मतलब डॉग लेना चाहिए ना, पहले ले आऊँ? कहती हाँ।
Now, I did not waste 1 second. Okay, हाँ हम जा रहे हैं तभी मैंने शुरू कर दिया. There was this page I used to follow which I've plugged before but I'm gonna plug again. They essentially post all of these desi cats and animals, and in the off chance like a hybrid animal that people adopt and then are not able to take care of, again, hey, whoa, I cannot be shitting on somebody who has to give their pet away. I You'll find out later in the story, I should not be somebody, so I'm not going to. कोई बात नहीं. For some reason they're moving or whatever, ठीक है, they can't. Because you don't know, man. You genuinely don't know people. What if, okay, they moved, they couldn't afford to take their pet? Yeah, man. What if, like, they moved because they're bankrupt or something and they actually cannot afford it? What if, like, I don't know, so many reasons. Like, I catch these days. मैं अपने आप को कैच करती रहती हूँ क्योंकि मैं बहुत ही कुत्ती कमीनी जजमेंटल इंसान बन गई थी बीच में. अभी भी हूँ, एज यू जस्ट सॉ. बट जितना आप अपने आप को कैच करोगे ना, उतनी बार आप चेंज करते रहोगे. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द ब्रेन. लव यू. यहाँ पे भगवान जी की एक फ़ोटो है, दिखाऊंगी किसी दिन, ठीक है. तो मेरी मम्मी ने बोला, हाँ, तो दिस पेज बेसिकली पोस्ट लाइक ऑल दीज पीपल एंड ऑल दीज बेबीज. एंड उस दिन मैंने एक पोस्ट देखा, एक छोटी सी चुहिया का, ठीक है, इतने कप जितनी बड़ी थी नहीं वो, ठीक है, और हौसखास में रात के 2 बजे घूम रही थी, ऐसा मुझे बताया उन्होंने जिनको मैंने कॉल किया, जिनका नंबर था उसमें, ठीक है. 2 बजे रात के हौसखास में 28 दिन की बिटिया घूम रही थी, ठीक है. और मुझे उसकी शक्ल देख के भाई, ओ माय गॉड, ये तो मेरा बच्चा है, ये तो मेरा बच्चा है. फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आई वेंट and I got her from Horsecast, which is crazy, dude. I was in Horsecast for the last 12 years. She was just born. I always keep thinking कि मैंने इसकी मम्मी को कभी ना कभी तो प्यार किया होगा या कभी ना कभी कुछ खिलाया होगा. पता नहीं, मुझे ऐसा किस what are the odds that like she was there, I was there, and then we both come to Noida and then we live our lives together. So that was कुल्फी. तो मेरी ज़िंदगी में कुल्फी की एंट्री हुई, जो कि अब एक बहुत बड़ी प्रिंसेस है. कुल्फी प्रिंसेस, उसको हम बहुत प्यार करते हैं. और वाह, तब मेरी लाइफ में होती है कुल्फी की एंट्री. ओके, दिस इज़ लाइक मे ऑफ 2022. नाउ द फर्स्ट लाइक 3 months or 2 months or so, you cannot take them out because their immune system is extremely fragile. So no walks, nothing also. But you do take them to the vet for immunizations and just checkups and stuff. तो उसके लिए मैं कुल्फी को लेके जाती थी. Outside of that, I stopped stepping out of the house completely because इसके साथ रहना पड़ता था, क्योंकि मैं जैसे ही रूम से बाहर आती थी ये रोना शुरू कर देती थी and I used to feel really bad. तो मैं ले आई. अब my mom did not have the best reaction because I think my mother, just like many people in my life, when I say I'm going to do something, they think हाँ ऐसे बोल रही है, and then I do it and they're like, huh? So like if I ever tell you I'm going to burn you, I'm going to do that even if I get burnt. But I'm not going to do that because I like meditate and shit now. But yeah, मैं ले आई, फिर मम्मी का मुंह फूल गया. और तब कुल्फी पता है कितनी छोटी थी, इतनी सी थी यार वो. मतलब वो एक हाथ में लेके आई थी मैं उसको. शी वॉज दिस चिंगू चिंगू बेबी. ओके, टीनू मीनू बेबी. तो the first few months after Kulfi comes back home are not the best because ek to my mom did not expect. Also, background, my mom is afraid of dogs. Okay, dur se she's like, cute, but like otherwise she's disgusted by or was. Now she's not disgusted by dogs, but she's definitely afraid of dogs. Okay, so even when like 15 centimeter ki kulfi used to like tapa 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 in the house, my mom used to run. ठीक है, 20 फुट दूर होके भी वो दौड़ती थी. एंड या आई मीन किसी का फियर आप वो नहीं कर सकते कि क्यों डरना है इससे, ये नहीं बोल सकते आप कि क्यों ही डर रही हो टाइप. अब किसी को डर है तो है, दैट्स फाइन. बट या outside of this, my life had some semblance of structure now. I did not smoke up as much because I mean, in the day, I just wanted to be up early, make her food,
then play with her, then just watch her when she's sleeping because she still is the kuchu muchu of my life. कहाँ गई कुल्फी? Okay, sorry. ठीक है, तो semblance of structure is back because I'm making meals. तब तक like the first 1.5 months, 2 months, I didn't take her for walks, but I used to take her to the terrace every day so that she could do pee pee poo poo. Although there were like pee pads in my room also, workstation की तरफ. But हाँ अच्छा था यार, like it was great, incredible. But very quickly, after like a month of it, when it's worn off, I realized how this is impacting my mental health even further because imagine, okay, 2021, last 3 months of traveling in the hills, full freedom, full beauty, full AQ and mwah, mwah, okay, doing whatever the fuck you want. Then coming back here, and then here also the first 2022, first 5 months, and May में आई ना कुल्फी मेरी लाइफ में 5 months of going out every day, doing substances every day to just numb the pain of everything. So like a good 8 months of just avoidance in every way possible of my mental pain. Avoidance, brother. Okay? To then now having a young pup and taking care of her was not the hard part. I was actually enjoying it a lot. But the fact that I was now sitting at home all day, every day, I think month 2 of having her, I tried to leave the house and my mom said something. I don't remember the exact words, but it was along the lines of, इसको ले आइयो और अब हमें संभालना पड़ेगा एंड लाइक तुमको घूमने जाना है, ये वो ऐसा कुछ बोल दिया था मुझे, विच इज़ फेयर बिकॉज मैं लेके आई हूँ, उनको डर लगता है तो सारी जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए. बट मुझे बस ये लग रहा था कि मैं उसको खिला पिला चुकी हूँ, पॉटी करा चुकी हूँ सुबह छत पे, अभी वो नहीं करेगी, मैं 2-3 घंटे निकल सकती हूँ राइट. तो सेकेंड मंथ में तो बहुत ही अवर्सिव था रिएक्शन. तो फिर उसके बाद 2 महीने और मैं बैठी रही घर पे, सिर्फ ऑफिस जाती. बताऊंगी रुको, वेट वेट वेट. ठीक है. ओ बाय द वे, शिट, एट द एंड ऑफ माई हिमाचल ट्रिप विद कुल्फी को लाने से पहले आई ऑल्सो क्विट माई जॉब बिकॉज मेरे बन नहीं रही थी कुछ उसमें फ्रेंच लोगों के साथ. And also I don't like the role I'm in, right? And I also just don't want to do a job. Sometimes you need a break. So when you need a break, you need to take a break without being afraid of the funds, which is what I'm doing now in life. Part 3 mein bataungi. But I really had it up till here with that job. So while I was in Old Manali by myself, I quit my job. So I'm unemployed now. But अभी मेरे पास savings है. Like मेरे पास 50,000 मैंने प्रीमियम दिया था, तो मेरे पास 3.5 लाख के आसपास है. लाइक ठीक है, अभी मैं चिल कर सकती हूँ थोड़ा टाइम. ठीक है, आई कैन चिल आउट अ लिटिल बिट. 4 के आसपास होगा, जो भी व्हाटएवर. ठीक है, तो अब कुल्फी आती है मेरी लाइफ में, मैं उसका केयर ले रही हूँ. तो फर्स्ट 2 मंथ्स मैं कहीं नहीं गई. एंड लाइक इमेजिन आफ्टर ऑल ऑफ दोज मंथ्स ऑफ अवॉइडेंस, now you're at home, you're only smoking up once a day at night because I also didn't want to smoke up around her. You know, she hates, Kulfi hates the smell of weed a lot. I love it. I love it. Like, you know, she's like, नहीं ये सब दूर रखो मुझसे, उसकी शक्ल देखनी चाहिए. Okay, I love it. But yeah, I'm only smoking up at night. But पता नहीं, I'm just sad. I'm really really sad because कुछ रिजॉल्व तो किया नहीं ना. नशे कर रहे थे, रिजॉल्व कर लिया, फिर डॉगी ले आए, और अब डॉगी को खाना वाना खिलाने में बहुत अच्छा लगता है, छत पे लेके जाने में बहुत अच्छा लगता है, वेट के पास लेके जाने में, उसकी शक्ल देखने में बहुत अच्छा लगता है. लेकिन still sad, okay, because like all of these ideas I had associated to myself and everything else in life, it just everything was right there, you know, weird. तो दुखी हो जाती थी मैं बीच में बहुत ज़्यादा. फिर क्या होता है, आफ्टर 2 months of having her, maybe June, July, August, my parents, my dad really cozied up to Gulfi. It's cozied up. Does cozied up have negative connotation? I don't know. Weird. But like my dad really was not afraid of Kulfi. Basically, वो उसको प्यार कर लेते थे, उनको डर नहीं लगता था. Because I think my dad was also into dogs when he was younger. And उनके साथ भी उनकी family I think similar सा कुछ किया था, और they were like नहीं आएगा doggy. No. ठीक है, फिर वो ले आए थे, and then the dog died. And since then he was like, okay, I'm not gonna get a dog. ऐसा कुछ तो हुआ था, मुझे exact story नहीं पता, but मैं पूछूंगी. ठीक है. So he like used to find Kulfi cute and not disgusting, and used to be able to take care of her a little bit.
And later in life, he took a lot of care of her when I was not in the position to. So grateful. And now my mom also like gives her food. My mom's not afraid of her, which has been the happiest thing for me to see in the last few years. Anyway, going back. So after August, after Kulfi's been with me at home for 2 months, I'm able to leave the house a little bit. But 2 months of being at home, I don't know what it triggered in me, but I just felt like I was 14 again and I was on house arrest again, like I was in that Hoskaswala house. And I don't know, it just like did not sit well with me at all. Okay. So by August, my funds have also started drying up because now my thing is कि मैं थोड़ी से बिना सोचे समझे पैसे खर्च करती हूँ. एक कॉलर खरीदना है, नहीं एक क्यों खरीदना है, एक समर थीम्ड कॉलर खरीद लेंगे, 3 शेड्स ऑफ पिंक खरीद लेंगे, बेबी पिंक, हॉट पिंक, बारबी पिंक, ठीक है. एंड ट्रीट्स खरीदेंगे तो अभी पूरे गांव जितनी ट्रीट्स, गांव के लिए ट्रीट्स खरीद लेंगे, ठीक है. और पिंक टॉय खरीदना है तो 50 पिंक टॉय खरीदने हैं कुल्फी के लिए. मैं ऐसे पैसे स्पेंड करती थी. सो बाय अगस्त माय फंड्स हैव आल्सो स्टार्टेड ड्राइंग अप एंड अगेन आई एम लाइक ओके, I need to find a job. Now, this time in August, when I thought that I need to find a job, by this time the evil boss, the toxic evil boss, जिसके बारे में कोई तो कमेंट करो कि तुम्हें सुनना है. एक कमेंट नहीं आया यार, एक कमेंट चाहिए मुझे बस, that you will be interested. This is not a baggy, this is not okay. I don't like at all. This is my earring का वो, by the way मैंने पहने क्यों नहीं है, निकाल के रखे थे, पहन लेंगे. Damn, it looks like that, right? No, I told you I don't fuck with uppers. मैं सोचती हूँ कभी कभी कितने लूजर होते हैं लोग जिनको अपर्स की जरूरत पड़ती है. मतलब कम ऑन, यू ain't got no energy. फिर मैं सोचती हूँ उन लोगों को लगता होगा कि ये कितने लूजर हैं लोग जिनको डाउनर की जरूरत पड़ती है. मतलब कम ऑन, यू कांट काम योरसेल्फ डाउन. एंड देन फिर मुझे लगता है हम सब कितने लूजर हैं ना. जब भी आप किसी और के बारे में थोड़ा सा भी शिटी सोचो, आप तभी लूजर बन जाते हो. एंड गेस व्हाट, मैंने बहुत ज़्यादा शिटी सोचा है लोगों के बारे में और उनको बोल भी दिया है और फ्रेंडशिप्स भी ख़राब करी हैं. बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट ओन अप कर सकते हैं हम, ठीक है. बेचारे मेरे पार्टनर्स, बताऊंगी मैंने बहुत ही बकवास चीज़ें की हैं यार लाइफ में, एकदम वाहियात. बट अगर आप उसको ओन अप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया. बताना. वाओ, ये इयररिंग्स जब मैंने खरीदे थे ना तो मुझे ऐसा लगता था कि जगन्नाथ जी के आईज हैं, ऐसे नहीं लगता है? वेरी ब्यूटीफुल. So where am I? So I need a job now in August, okay? And by this time, my evil boss has reached out to me earlier in the year, has apologized, and I was also very rude to him towards the end. I was like, fuck off. So I also apologize. So we're not like, we don't hate each other, but we're not friends. I'm not ready to have him in my life as a friend anymore because that's precisely what fucked everything up the last time, okay? Because as I said, accountability, I had a full role in like blurring that background, blurring that boundary between professional and personal. Why was I available at 1 a.m. to do work in the initial days? Why was I available? Why would I go to every place that he would want me to show up at? Why? तो उस पर बनेगी बेसिकली स्टोरी टाइम. अपना भी मैं साइड बताऊंगी कि प्रमोशन के लिए, या नॉट प्रमोशन बट लाइक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या विजिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या और अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए, पता नहीं मैं जो भी व्हाटएवर. बाय दिस टाइम वी हैव buried the hatchet, और hatchet ही प्रोनाउंस करते हैं ना, hatchet. 43 minutes. ओके, जल्दी बताती हूँ, जल्दी. आई एम सो ग्लैड हमने 6 महीने एटलीस्ट, 6 नहीं, अगस्त इज द 7th month, 7 months कंप्लीट कर लिए. लास्ट वीडियो वाज 58 minutes long and I only covered like 4 months in it. That's crazy. But जल्दी. So now in August, I see that there's an editorial opening in my former company. Because by this time, my original OG company जिससे मैंने rage quit किया था has now been acquired by an even bigger company, and now they have like all of these international magazines, famous magazines that are now part of their media arsenal. So yeah, very interesting. And this editorial role is for one of those international magazines. ठीक है, अब मैंने कर दिया अप्लाई, ठीक है. And I gave like 3 rounds of interviews, 2 written rounds, no, yeah, 3 or 4 rounds. Okay, so I go through a proper channel. A lot of the people in that organization think that every single position of mine
came to me very easy. Yeah, she's friends with the HR. Crazy. You all would not believe just how professional that HR is. And every time we talk, because her and I from she's also from Lucknow. I don't know if she's gonna get in trouble for me saying this, but I have to tell you guys this, and I'll delve into it a little more in that office wala video अगर मैं कभी बनाऊँ तो. Every time we sit, we just talk about Lucknow. We talk about how both of our dads are like, I don't know, cute and annoying with their ways. मतलब नहीं जाना डॉक्टर के पास, नहीं जाना, but and like never has she ever divulged sensitive information. Never has she ever told me anything that as an HR she should not be telling me ever. In fact, this bald dude, okay, this evil boss, he used to tell me people's salaries in my team. Like, you're not supposed to do that as a leader. You're like inciting feelings of resentment and shit amongst people. And he would whatever. बनाऊंगी इस पे साले पे वीडियो बना. अभी मैं ये सब बोल रही हूँ, बट वो 50 लाया प्रॉब्लम तो मैं भी 50 लाई हूँ प्रॉब्लम. आई वांट यू ऑल टू नो दैट. ठीक है. इन एनी केस आई डू माई 3 rounds, I get through, and now I'm working for a really nice magazine that I grew up reading, and it's like a proud little thing, okay, to be associated with that magazine, because इससे पहले whatever projects I've done, my parents have never known anything that any of the brands that I've been associated with. But when I say this magazine's name, my parents know, all of our relatives know, so it's like a cool thing I'm doing. So for a very brief period of my time, I joined in September. So say September to October. Yeah, only lasted a month. Then I went out of my way to fuck it all up. But like that 1 month of me joining was really good. I was, but like it was very rare. Because मैं इतना थक जाती थी. हफ्ते में 2 बार मुझे ऑफिस जाना रहता था. And I used to live in Noida. My office was in Gurgaon. ठीक है? But in any case, when I took this job up and when I had applied for it, actually, I had decided in my head that this time I'm not going to let professional and personal boundaries get whatever, it'll always be distinct. I really had that resolve. But when I joined, I found out that while my main manager, who will be assigning me tasks and doing my regular feedback calls and just be my main person, would be stationed in the US, he would have a dotted line reporting. पहली बार लाइफ में dotted line reporting थी. सबकी थी dotted line reporting, I think, to him, because he was seen as like the jagmata of the India team. Later, this bubble was burst for everybody and including him. Later, my bubble was also burst. But that's the truth of life. If you get too arrogant, like he did and like I did, आपका bubble दुनिया बर्स्ट करती है. एंड जितनी जल्दी आप वो सीख लें उतना अच्छा है. नहीं, मैं बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रही हूँ, तुम्हें बस कॉन्टेक्स्ट एकदम अंडा तो अभी नहीं समझ आएगा, बट प्लीज कमेंट अगर तुम्हें इसके बारे में मेरी इविल बॉस की बात स्टोरी सुननी है तो. ठीक है. तो आई हैड डिसाइडेड इस बार मैं बिल्कुल भी अपने वर्क आवर्स के बाहर नहीं अवेलेबल रहूँगी. कभी नहीं करूँगी ऐसा मैं. I will fully like stick to my work. 48 minutes, crazy. I really have to go fast. But how can I go fast? Because this next part is so fun. Fuck it, it'll be long. So by this time I'm like, I start doing this job. So I'm only doing मेरा work जितना काम है उतना, और 2 हफ्ते हमको 2 दिन in the week हमको बुलाते थे ऑफिस. Wonderful times. I used to get really exhausted. That was the point. That was why I was not waking up a lot those days, that 1 month. Because yeah man, आप 2 घंटा 4 घंटा ट्रैवल कर रहे हो हफ्ते में 2 बार, जब आपको बिल्कुल आदत नहीं है. The last 3 years I've been on work from home. Ever since I joined, I've been on work from home. The first 2 months maybe I got to go into the defense colony office when I was still in Hoskas, and then the pandemic hit. So I've had no experience of going to the office. 3 states away तो बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा बिल्कुल भी नहीं. बट फिर भी मैं कर रही हूँ. But 2 weeks was good enough for me to keep me on my toes. Stick to like a timetable and get shit done. Very good. Then in October, I don't know why. I really don't know why. I think it was because one of my friends, I'm not blaming her at all. Who the fuck? Not blaming her. It's just what was happening around. Did she tell me to do this? No. But
I saw she was going on like 5 dates a week. She had just moved out from her Gurgaon house. She was living in her apartment and she was like going on 5 dates, fucking 3 men a week. She was living that life. And to me, it looked like she was not romantically attached at all to anybody. So she was having a fun time, okay? So I was like, let me try online apps because the last time I tried an online app, I dated the girl for 5 years. You all know. So I was like, उसके बाद I had never dared to do it. So I was like, ठीक है. Then I tried to use a dating app, okay? But I knew that I didn't want to do like the whole 5,000 people thing. Which again, there's no good or bad. Whatever floats your boats, I don't give a fuck, okay? But I was like, it's time for me to find true love essentially, okay? क्योंकि अब तो मैंने जॉब भी कर ली है और अब तो कोई डॉग भी मिल गया मुझे, अब तो मेरी लाइफ बेटर हो रही है धीरे धीरे. लेट मी फाइंड अ पार्टनर. सो आई डाउनलोडेड बम्बल एंड आई एंडेड अप मीटिंग. अब एंट्री होती है मेरे लाइफ में एक रैपर की, ठीक है? एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर भी वीडियो बन सकता है एक्चुअली, बट किसी का कभी भी मैं नाम नहीं लूंगी. जब मैं इससे पहली बार उससे बात हुई थी ना, तो मैंने उसका इंस्टाग्राम देखा. बहुत सारे रैपर्स जिनको मैं जानती थी वो उसको फॉलो करते थे, बट मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी. फिर मैंने उसका थोड़ा बहुत म्यूजिक सुना. मुझे नहीं कुछ इतना खास लगा, बट इस चीज़ का मैं ओन अप कर सकती हूँ कि द फैक्ट दैट ही वाज रनिंग अराउंड इन दोज सर्कल्स, ठीक है, वो मुझे काफ़ी कूल लगा. ओह, ही इज अ रैपर फॉर अ स्प्लिट सेकेंड, ओके. उसके बाद बिकॉज एट दैट पॉइंट आई थॉट नहीं नहीं, मैं थोड़ी ऐसी लड़की हूँ, मैं जस्ट बिकॉज वो रैप करता है इसलिए थोड़ी उससे बात करनी. ऐसा नहीं था. कुछ एक दो हमारी बातें हुई विच वर रियली रियली नाइस, रियली नाइस. एन इंसिडेंट दैट आई रिमेंबर इज दिस कि मैं ना कभी किसी को तू नहीं करती हूँ. तू ऐसा ये मैं यूजुअली बीच में करने लगी थी मैं बहुत ज़्यादा, बट यूजुअली मैं तुम बोलती हूँ किसी को भी. इफ एनीबडी नोज मी इन रियल लाइफ दे नो दैट मैं तुम यूजुअली बोल, तुम या आप अगर आप बड़े हो तो. बट यूजुअली तुम, हाँ तो तुम क्या है, इट्स नॉट लाइक तू. बट बीच में मेरी लाइफ ऐसी हो गई थी कि मैं सेम एज वालों को थोड़ा तू तड़ाक करके बात करने लगी थी, ठीक है. एंड दिस इज अ लखनऊ थिंग, तुम आप इज अ लखनऊ थिंग. तो मैं थोड़ा सा बीच में दिल्ली हो गई थी बहुत ज़्यादा, which I used to hate it when I would say तू something 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 to somebody. पर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे तू तड़ा करके बात करनी पड़ेगी टू फिट इन, क्योंकि मैं जब तुम बोलती हूँ तो लोग थोड़ा एक सेकंड के लिए ऐसे हो जाते हैं, which is weird. तो थोड़ा फिट इन करने के लिए मैं थोड़ा तू तड़ाक से बात करने लगी थी जिंदगी में, ठीक है. तो द फर्स्ट टाइम हिम एंड आई गेट ऑन अ फोन कॉल, आई एम लाइक हाँ तो तू क्या समथिंग समथिंग कुछ तो बात. इज लाइक ये तुम्हारी तहजीब, ऐसे बात करते हैं तुम आप क्या हो. तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी. आई वाज लाइक दिस इज द बॉय, ये बनेगा मेरा पति, क्योंकि ये तो तहजीब वाला लड़का है, ये तो मुझे मेरे रूट्स से याद दिलाता है, ठीक है. सो दैट्स हाउ आई लाइक started liking him. Not that he was a rapper, because that, how long can you like somebody for that? Not very long. But I thought he was a good person, or at least he portrayed to be that, which is what a lot of men do. I'm sorry if you're a man and you're watching this and you don't agree, but it's a fact. Men do that. Another thing that men do, you meet somebody, you know definitively whether or not they're your person. तो आप मुझे बोलो ना कि like no you're not my type, or like no I don't see anything serious happening, this will just be casual. No, men will like see somebody, they'll like partially like her, not like fall for her, partially like her and be like huh but let me just keep her around. And at 28 now I know exactly how that works, why that works, how to spot it, how to maneuver around it, how to dip out in time, all of that stuff. But back then, when I only had dating experience with a woman and some experiences with men, but not, I don't think we can count it romantically. But to me, I it just was like नहीं यही है मेरा पति, मैं इतनी डिवोटेड फील कर रही हूँ इसके लिए, तो ये क्यों नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा. एंड दिस बॉय, लेट्स गिव हिम सम क्रेडिट, he genuinely, he had a dream, okay? He was chasing a dream at that point. Being a pati was last on his list. In fact, he even sat me down once and said something like, relationship में नहीं हो सकता मैं, something like that. और तब मैंने वही बोला था कि हाँ तो फिर let's not talk or something, ऐसा कुछ.
But then men don't like that, right? What do you mean not talk? No, I want you around. I want us to meet all day, every day, and do kuchu puchu on the phone. But like, that does not sit well with me. Didn't then, will not now. So फिर कुछ तो करके I don't know what happened. Like, I'm dating him, okay? We're like into each other. अब इसके बाद ऐसा होता है, a month into dating him, that like, this is so bad. I hate that I have to admit to this, but I will. You know how like when you talk to somebody naya naya and you like want to be around them all the time and you just like want to be in their company, not do anything, but just be in their company. रात के 3:30 एक दिन we're both talking and he's like, मैं आ जाऊँ क्या ना, मैं माँ बाप के साथ रहती हूँ, and he's like, नहीं मैं आता हूँ ना, थोड़ी देर बालकनी से हाय बोल देना फिर चली जाना, ऐसे समथिंग. एंड इट्स नेवर जस्ट दैट. तो ये आता है रात के लाइक 4 बजे मेरी सोसाइटी में, दिल्ली से नोएडा, और फिर मेरी छत पे आ गया ये, ठीक है. तो फिर मुझे लगा कि थोड़ी देर तो जाके मुझे बैठना चाहिए. तो फिर मैं गई हूँ छत पे, और कुल्फी टिनू सी बेबी है, ठीक है. तो उसको तब तक झूठ का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उसको अभी भी नहीं झूठ का कॉन्सेप्ट, कहाँ गई, उसको अभी भी झूठ का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, विच आई लव, ठीक है. बट आ जाता है ये मेरी छत पे और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठ के बस बातें कर रहे हैं, ठीक है. और उतनी देर में मेरी कुल्फी को मैं नीचे बंद करके गई हूँ, ठीक है. मैं छत पे गई हूँ, कुल्फी स्टार्ट्स बार्किंग लाइक क्रेजी, ओके. मेरे माँ बाप जग गए. सो देन फिर वो पूरा फियास्को हुआ, where they were like, what the fuck is this, because that's not okay. My parents have been so strict their whole life. Post college they became chill, and now I'm like doing all of this shit, like smoking weed at home. They're still tolerating that, but what the fuck is this? I look back at this and I'm like, what the fuck was that? My parents were so right, okay. क्यों मिलना है, तो तुम मुझे दिन में मिलो ना. दिन में तो तुम उठते तो 2 बजे हो, जग तो तुम 2 बजे रहे हो दिन में, तो तुम आधा टाइम तो चला गया. बट एट दैट पॉइंट आई वाज क्रेजी इनफ टू लाइक बिलीव इट कि नहीं ठीक है, रात भर काम करता है तो सम शिट. बट इन एनी केस दिस incident causes further tensions in my family, especially between my mother and I, rightfully so, by the way. And she said something like, अपने घर में करना है ये सब, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा. Again, I fully agree with in present day, but at that point I was like, what do you fucking mean? मैं तो रेंट भी पे करती हूँ 25,000 पर मंथ, जो मैंने बोला था कि मैं रेंट पे करूँगी तो ये सब करने को मतलब गोल मेरा ये सब करने का नहीं था, but it was just to like be treated normally. But my normal at that point was very different, whatever. So at that point I'm like, you know what, I'm gonna fucking move out. I'm gonna fucking move out of this house. उसके बाद ऐसा कुछ होता है crazy in the next, I don't know, 2-3 weeks maybe, और like a month types, ठीक है. मतलब घर आ रही हूँ मैं, तब से ऑफिस जा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, एंड मम्मी से ज़्यादा कुछ खास बात नहीं हो रही है. they're all pissed with me, which is so fair, ठीक है. But then one day I'm in office, like a month into this incident, or like I don't know how long, a while into this incident, where this Baldy, I mean my evil boss, toxic boss, he says something like, now you have to show up 3 days in a week. He says that, not my boss from the States. This motherfucker says that. More tippany on this in that video, but I'm just like, okay, now 2 days is already very tough on me, energy wise, because I'm not used to it. But I'm still doing it because like the metro was right in front of my house, so मुझे इतना चलना नहीं पड़ता था. And वहाँ से साइबर सिटी की मेट्रो यूज टू साइबर हब में निकलती थी जहाँ पे मेरा ऑफिस था एग्जैक्टली. तो इतना कुछ मशक्क़त, although I had to switch 4 lines, blue to yellow to, no sorry, magenta, something like that. 4 lines I had to skip, and then rapid, yellow to rapid, something like that. But now he says 3 lines, 3 days in a week. Pehle to I'm genuinely pissed because I know his motivations for doing that are not work related. It's also not like a sexually abusing type thing. It's not that either, okay? I mean, not. As far as I understand, as far as I've seen things and analyzed things, itne saal mein, it was not that. It was something else. It was like a very weird narcissistic thing, which is like, I will walk into the office whenever the fuck at 11, and when I do, I should see people type shit. Like a power trip.
power trip. It's a power trip. But then at that point in my life, because of the things that are happening at home, I'm also like, I'm paying 25K here. How about I pay 25K for a one room kitchen there? बिकॉज मैंने तब तक housing.com वगैरह सब पे देख लिया था एंड मिल रहा था, ठीक है, 25,000 में ठीक ठाक घर मिल रहा था. सो makes sense, right? Because then I'll be able to go 3 times a week. That makes total sense. Cool. Let's do it. And credit to my rapper boyfriend. He was always against the idea. He, from the beginning, was telling me things like, manage nahi kar paoge tum, it's very hard, you've never lived alone, don't do this, you'll spend a lot of money, bro, is what he used to keep telling me again and again and again. But at that point, I used to think that he's just afraid because he makes no money. He used to make no money. I mean, like a little bit of money. Again, that's not a shameful thing. Like, it's chill. He just wasn't. So I used to fund everything. Like, I used to pay for every Zomato meal everywhere we would go out, everywhere. I think so. Huh. Abhi bhi, I think I'll tell you in the third part, okay, where I'm at with him right now. But like, yeah, I used to pay for. So मुझे ऐसा लगता था कि he's just afraid of me spending money and then not having enough money to spend on him. तो इतना तो मैं कमाती हूँ, don't worry. तो फिर I moved. मूव होने से एक दिन पहले या मूव होने वाले दिन I wrote like an emotional message to my father. A letter, actually. I think I wrote a letter and put it on the dining table to both parents. I don't remember what I wrote in the letter. I don't remember the contents of the letter. But then I remember my father sending me a WhatsApp message after that. After I already had moved into that house, I believe. Or I was on the way. I'll put it here. And I look back to this message so often in life. I love it. Thank you so much. But in any case, my parents helped me move into that house, and by this time it's December. Okay, so 3 महीने हो गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे घर देखे गाइस, बहुत सारे घर मैंने गुड़गांव में देखे, बट एक तो पेट नहीं अलाउड था कई घरों में, ठीक है. फिर कुछ एक और भी इशू था, I don't remember what, but pet was the biggest thing. So I finally found a house which allowed me to live with Kulfi and also had a girl living right in front of me. So it took a while, but then I finally found that house. The issue is this was the worst fucking house to move into because it was well built. Pretty house, okay? And काफ़ी कुछ था भी उसमें, AC वेसी, although तब चाहिए नहीं था. But like सब काफ़ी कुछ था, सोफ़ा वगैरह अच्छा था, good house. But it was on the 5th floor and there was no lift. And the colony was also not gated. Up until now, I've always lived in gated communities, at least after I moved to Delhi and Noida. So a non-gated community, I don't know, all of this was bad in hindsight. But in any case, मैं मूव हो गई हूँ, ठीक है, अब उस घर में मैं मूव हो गई हूँ. अब क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो हम चाहते हैं, हमें मतलब इंसानों को, बहुत ही अच्छी बात है इफ़ आपको नहीं लगता है ऐसा जैसा मैं बताने वाली हूँ, बट मुझे उस एज में ऐसा लगता था कि मैंने ये जो पिंटरेस्ट वाला सेव किया है, माई ड्रीम अपार्टमेंट, ड्रीम दिस ड्रीम दैट, जैसे ही मैं घर में एक कदम रखूँगी ना वैसे ही वो हो जाएगा. My life का background music is gonna change, filter of the colors is gonna be warmer, it's just gonna be butterflies everywhere. I really at that point was so out of touch with reality. I didn't realize just how much work goes into keeping a house in order and living alone because I was kind of spoiled. इससे पहले मैंने घर पे कभी कपड़ा नहीं धोया है, ठीक है. तो मुझे बिल्कुल भी रियलिटी जो आ रही है मेरी तरफ, कितनी स्पीड से, क्या होती है हाई स्पीड, 50 बिलियन ट्रिलियन किलोमीटर्स पर मिली सेकेंड, 5000 बिलियन लाइट ईयर्स से आ रही है मेरे पास. लाइट ईयर स्पीड होता है ना, हाँ, वो उसका मुझे कुछ पता नहीं आता पता, ठीक है. एनीवे, मैं पहुंची हूँ डे 2 ऑफ बीइंग इन दिस अपार्टमेंट. It's December, okay, NCR December, so the cold is beginning to creep in धीरे 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 धीरे. And anyway, up until like 2023 did not do well with winter, but the last winter 2025 2024 has been stellar. But up until then, for many years in life, up until then, winters were not good for me. And I think half of it was also like psychological. मैं अपने दिमाग में कर लेती थी ऐसा, अगर मैं सैड नहीं भी हूँ, विंटर आ गया, मैं तो सैड होने वाली हूँ,
और फिर मैं हो जाती थी, बिकॉज यू मेक योर रियलिटी मैन, एग्जैक्ट, you what you think becomes your reality. So it's beginning to get cold and I'm like still a little sad because I'm making food, but I'm making like sandwiches क्योंकि और कुछ बनाना नहीं आता है मुझे तब तक. And the house is also getting kind of dirty, so I'm just like, what is happening? Also, the house is very quiet, okay? I love quiet houses. I've been very blessed that every single house that I've lived in, yes, every single house I've lived in has always been a quiet house. घर के अंदर क्या हो रहा है वो, that is separate, but like environment wise, surroundings wise, I've always been away from the road, main road, always been blessed with not noisy neighbors. The construction तो चलता रहता है यार, once in a while this happens, we also do, हमारे घर पे भी होता है construction, but by and largely, like I know friends who live on the fucking, like not on the road, but like their balcony looks down on the main road. But this house is eerily quiet. It's on the 5th floor, okay? मतलब eerily quiet. The quietness is, the quiet is kind of crazy. तो of course अकेले हूँ मैं, अब मुझे रोकने वोकने के लिए कोई नहीं है. I started smoking blunts. I started doing bong rips. And this guy, this rapper guy, okay? Wow, it's 1 hour 6 minutes. पता नहीं यार कोई देखेगा कि नहीं, बट मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए भी ऐसा सोचा था, बट फिर देख लिया कुछ लोगों ने, ऐसे नहीं सोचना चाहिए. और ये हम क्यों बना रहे हैं? अपने लिए, ठीक है. दिस गाय हु आई थॉट, पता नहीं मुझे, मैंने क्यों ये सपना सजा के रखा था कि हाँ यार मैं घर ले लूँगी, फिर वो आएगा और फिर वो अपना म्यूज़िक रिकॉर्ड करेगा और मैं काम करूँगी, और फिर हमें अच्छी सी बहुत स्वीट सी लाइफ जिएंगे यहाँ पे, ठीक है. But he would barely show up, and I'm so glad. But I'm not so glad, but like yeah, at that point I used to be so mad कि भाई मैं अब यहाँ रहती हूँ, जब मैं अपने घर पे रहती थी तब तो तुमको रोज मिलना होता था, और अब तो तुमको आने का नाम ही नहीं ले रहे हो, टाइप स्टफ आता था वो, बट लाइक वेरी रेयरली. और जब आएगा तो कुल्फी को उस रूम में बंद करो, कुल्फी को उस रूम में, डर लग रहा है मुझे, डर लगी है वो, ऐसे करता था, ठीक है. साले काट ली थी काश तुझे कुल्फी, बट नहीं काटती है वो, क्योंकि वो कुच्चू बेबी है ना, वो किसी को नहीं काटेगी. तो ये नहीं आता था बेसिकली, ठीक है. ये पता नहीं कहाँ शो कर रहा है, कुछ कर रहा है, कब फ़ोन नहीं उठा रहा है, जो भी व्हाटएवर टाइप का इंसान है, ठीक है. तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, बहुत शांति हो रखी है, बुलाओ दोस्तों को. एंड बाय दिस टाइम लाइक आई नेवर, आई मीन माई फ्रेंड्स वुड कम ओवर टू माई हाउस बीच बीच में, एक्चुअली लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव, बट जैसे एक एक वो होता है, एक टाइप का घर का एटमॉस्फेयर होता है कि शाम में कोई भी दोस्त कैन वॉक इन, ठीक है. वो ऐसा होता है यूजुअली जब आप एक कॉलोनी में बहुत टाइम रहे हो या एक स्कूल में बहुत टाइम रहे हो और आपके स्कूल के दोस्त आसपास रहते हैं, सबके पेरेंट्स चिल हैं, तो वो शाम में आएंगे, ठीक है. तो शाम में कोई भी आ सकता है घर, ठीक है. बबली के घर जा रहा हूँ, वियर्ड नेम, बट इसके घर जा रहा हूँ, उसके घर जा रहा हूँ, व्हाटएवर, ठीक है. मेरा घर कभी वैसा नहीं था, मेरे घर के आसपास कोई नहीं रहता था आसपास में. सीआर पार्क में रहते थे, मालवीय नगर, मालवीय नगर नॉट दैट फार, सीआर पार्क इज ऑल्सो नॉट दैट फार, बट वॉकिंग डिस्टेंस में कोई नहीं रहता था, ठीक है. तो मेरे जितने भी स्कूल में दोस्त आते थे या कॉलेज में दोस्त आते थे, कॉलेज में फिर मेरी ज़्यादा दोस्त आती थी घर, क्योंकि कॉलेज से सीधा ही आ गया ना, मेरा घर 12 मिनट दूर था कॉलेज से. तो मेरा कॉलेज लाजपत में था. तो मेरा घर कभी भी वॉज नेवर द टाइप कि I don't know who's gonna show up, but people might show up type house. But here, for the first time, I got that opportunity to make my house like, you know what? You got nowhere to go? Come to my house. तो उस टाइम मेरे घर पे इतने दोस्त आते थे रोज, एवरी डे somebody or the other would be over. सोशल मीडिया फ्रेंड, वाओ, इतने सालों बाद मैंने ये एस वाला स्टिकर अपने नोटबुक से हटाया. वापस लगा देती हूँ बिकॉज ऑफ मेमोरी. मेरे घर पे सब आ रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जिनको जानती हूँ, गुड़गांव में आसपास जो रहते हैं उनको जानती हूँ, ऑफिस के रेयरली आते थे दोस्त, बट आए थे एक बार दोस्त. एंड द हाउस वाज इन सच अ टेरिबल शेप एट दैट पॉइंट, आई फेल्ट सो एम्बैरेस्ड, बट उसमें हम बाद में पहुँचेंगे. बट लाइक एवरी डे समबडी और द अदर इज शोइंग अप एंड वी आर ऑल अप, ओके. नाउ इसके बीच में ऐसा ऐसा एटमॉस्फेयर है, तो फिर वो ऐसा बोलने लगा कि तुम्हारे तो सिर्फ दोस्त ही आते रहते हैं, तो मैं कभी आऊँ. ही स्टार्टेड यूजिंग दैट एज एन एक्सक्यूज, which by this time I was so strung out. I was like whatever. Then one day I find out he has gone to like some concert or something, अपना कुछ perform कर रहा है ये.
And it's crazy how many of you all actually know him, okay? You all will know him. But हम नहीं, no. तो कहीं तो कॉन्सर्ट पे गया है चंडीगढ़, एंड देन आई एम कॉलिंग, आई एम लाइक तुम पहुंचे हो वापस के नहीं? आई वाज लाइक सेफ्टी भी था, एंड आई वाज लाइक are you coming or are you not coming? Should I go to sleep? Like, what should I do? Okay. And then he just didn't call back. And I called him like, I don't know, some 16, 17 times. Didn't pick up, और ऐसा कुछ तो ऐसा इवेंट हुआ था. फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है, समथिंग लाइक दैट. मैं उसको ब्लॉक कर देती थी कि जब मुझे गुस्सा आता था, आई वाज लाइक फक ऑफ, ब्लॉक, फक ऑफ, गेट लॉस्ट. फिर मुझे लगता था कि नहीं, अनब्लॉक, जो भी, ऐसा ऐसा बहुत टर्ब्यूलेंट सा था. Then one day he's over and he's telling me some shit like, and we've just had a fresh fight, okay? It's at 1:10. 1:30 तक इसको बंद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? That's crazy time, but ठीक है. So after a turbulent fight, he's come over and he's saying something like, and I remember his exact words, okay? He said something like, तुम इतनी crazy हो कि मुझे बाकी लड़कियों से बात करनी पड़ती है. I was like, make it make sense. तुम इतनी क्रेजी हो तो मुझसे बात करना बंद ही कर दो ना. मुझे बोला कि मुझे नहीं, मुझे तुमसे बात भी करनी है. तुम ये क्या स्टेटमेंट है ये? तुम इतनी क्रेजी हो या तुम इतनी पॉजेसिव हो कि मुझे बाकी लड़कियों से बात करने का मन करता है. और उसका मतलब ये था, उसने मुझे नेक्स्ट 1-2 लाइन में एक्सप्लेन की कि मतलब रिलैक्स करने के लिए, मतलब लाइक टू चिल आउट, आई हैव टू टॉक टू अदर गर्ल्स. व्हाट अ फकिंग रिटार्ड ब्रो, व्हाट द फक. वो सुन के मेरा फ्यूज उड़ गया. फिर मैंने उसका फ़ोन स्मैश करने की कोशिश की थी, या खींच रही थी मैं, समथिंग लाइक दैट. बस उतना ही याद है, क्योंकि उसके बाद फिर आई जस्ट स्मोक्ड अप. एंड ये बहुत ही डिफाइनिंग इवेंट था, क्योंकि इसके बाद मेरे लिए आदमी सिर्फ एक स्पेयर डिल्डो था, ओके? एंड ही स्टिल इज दैट पर्सन, विच सक्स. इज ही रियली? इज ही रियली? नो. Not a spare dildo, like a spare texter. We can say something like that. Yes, spare texter. But that spare dildo term vocabulary, you'll see a lot in my that term you'll see a lot in my vocabulary speaking now. Because पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझ में कुछ प्रॉब्लम है कि आदमी मेरे साथ ऐसे हैं, ठीक है? फिर मुझे रियलाइज है, नो नो नो, ये आदमी ही ऐसे हैं. सो ऐसे जो स्लटी से आदमी है, इनको ऐसे ही ट्रीट करना है. ओनली अ मैन हु जस्ट द सेम थिंग दैट दे डू टू अस. And I'm so sorry if you're a man and you're watching this, but you know it's true. In romantic capacity, you'll absolutely lose your brains and have no sense of judgment and are heavily ruled by lust. And I refuse to give in to that. ठीक है? Anyway, क्या बता रही थी मैं? हाँ, तो ये टर्म आप लोग बहुत सुनेंगे, आपको बहुत अजीब लगेगा कि क्या बोल रही हो. My God, so like you use men now? No, but I also don't overly give myself, my time, my attention or anything to a man who's in that category. मतलब मैं कोई एफर्ट नहीं करूँगी, ज़ीरो अंडा एफर्ट करूँगी मैं. And you'll always be a spare option. If you have cheated on me, if you have lied to me like that, if I hear that you have cheated on another girl or lied to another girl and you're boasting in front of me, you go to that category, and you're just called for a good time, or like when nobody's texting and I just need like something, that's fine. Any case, that's also something I'm actively working on, because मेरी लाइफ में ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि मैं उस लेवल तक पहुंचूं कि मुझे ऐसे ईवल काम करके किसी को किसी चीज़ के लिए यूज़ करने की ज़रूरत पड़े. बट व्हाटएवर, ठीक है, I'll talk about it on my podcast maybe someday. But in any case, this is a turning point. But after this, I lose all respect for him. I'm like, bitch, fuck off. Who the fuck are you? And I'm sad, obviously, because like this whole dream of a perfect like family, what the fuck? It serves me right, actually. Because why would a man who's met me 3 months ago be so in love with me that he would be so dedicated? I think it serves me right. I had like some sort of a void when it comes to self love. I had a big void when it comes to self love. And serves me right for believing that shit and not believing myself. You know what I'm saying? तो इसके बाद एक दिन मेरी एक दोस्त आती है, and I don't remember, and she's from Noida, okay? So yeah, I don't remember whether she just had it on her and we decided to do it or what, but from my memory, what I'm recalling is that we ran out of weed, okay? We didn't have any more to roll. So I was like, okay, what to do? And then
I was like, okay, what if, as a joke, what if we had like a Xanax or something? Okay, by that time I know she's medically put on a couple of things by a psychiatrist, but I don't know what. I've never bothered to ask. I just don't know. And she's like, that's my SOS. I have like 5 strips of Xanax with me. You want some? And I've been offered things before in life. I've been offered things after that also, but I've never been, I don't know if I want to call myself weak, but I've never been so like thoughtless, just so like impulsive. I was like, yeah, sure. She hands me like three Xanaxes. Um, did she give me three? No, she gave me one. Yeah, and this was कितना strength का 1 mg का, ठीक है? 1 mg या 2 mg, ये नहीं याद, 2 mg शायद, याद नहीं मुझे. But she hands it to me and I eat one. And in 10 minutes, I'm like, wow, this is calming me. I feel calm. Okay. Now, for a lot of you that don't know this, Xanax belongs to this group of uh, medicine called benzos, which is an anti-anxiety medication essentially. And जितना आप उसका mg बढ़ाते रहते हो उतनी उसकी strength बढ़ती रहती है, and you develop a tolerance for it very quickly, which is why when doctors prescribe you this, which did happen to me later in life, they go very slow, and they're very like, they monitor it very closely. But here I had my first taste of my first 1 mg or 2 mg, I don't remember, Xanax, and I was like, this is it. This is what is going to take my pain away. So I asked her for 2 more. Gumani, gumani, gumu gumu, gum gum. Wanna come? No? Okay. So I asked her for 2 more, and if you read online, Xanax is supposed to be like a euphoria inducing something something. ऐसा कुछ यूफोरिया तो मुझे यूफोरिया हुआ मुझे दूसरी पिल से, जिसके बारे में मैं बताऊंगी. बट ऐसा कुछ, it's just that everything shut down. All of my thoughts, okay, all of my thoughts went quiet. The world went quiet. My body, pura body, felt relaxed. Okay, I just was relaxed. And कुछ सुनाई, ऐसा नहीं है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, but everything was slow. And I felt sleepy, and I loved that feeling. I can induce this feeling by popping like 3 pills. Fuck yes. For the next 7 months, I did not look back. Because 7-8 महीने से ज़्यादा होता नहीं है किसी का pill addiction. In any case, December, I start doing Xanax. And like a lot of it, because as I said, you build a lot of tolerance to it, right? So there was a point where I was popping like 17, 18 Xans a day. And I don't know how I managed to have a job. Actually, I know, because I found this one like to-do list from one of those days where I'm like, okay, da-da-da, score Xanax, don't do it. Then da-da-da, work, da-da-da, work, da-da-da, work, da-da-da, then score Xanax, something like that. Crazy. That's how I like managed to, because I would do my work and then pop maybe 1 or 2 just for the effect, because the withdrawal of this is also kind of crazy. Okay, it's insane. The withdrawal is insane. But then I would score it all from her, by the way. So this is not her regular medication. Okay, she has schizophrenia, by the way. So this was not her regular. How will I finish this in 12 minutes? But I'm gonna try it. Okay. This is not her regular medication. This is her SOS, meaning like when she has visual hallucinations or like auditory hallucinations, तब उसको SOS की तरह जब ज़रूरत है तब खाने के लिए बोला गया है, ठीक है. एंड उसको होते हैं hallucinations, बट हर रोज़ नहीं होते हैं, इसलिए बच जाती हैं उसकी. तो शी इज़ गिविंग दिस टू मी फॉर दैट होल मंथ ऑफ December. फिर eventually I think people at her home or like maybe her doctor realized, where are all your Xans going? Why are you refilling it so often? And then she gave me a fake prescription to get it, which worked out once and then never again, because I don't know. They can just tell, chemists can just tell when you're like a druggie, okay? They can just tell when you're like not real with what you're doing. So in any case, we start doing Xans and we're also smoking, and beach maybe we're also like drink. So everything's happening together.
ऑफ कोर्स मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था कि ये सब मत ही करना, बट अगर तुम समहाउ इस सिचुएशन में हो भी और तुम ये सब कर भी रहे हो, कभी भी कुछ भी साथ में मत करना, प्लीज, you can die, because benzos basically like relax you. Benzos are the leading cause of ODs, and I was this close to an OD. So I did not complete my sentence, but what I was trying to say before this is this, that benzos essentially relax your body, okay? A Xanax will relax your body, and if you take too much of it, it will relax your body and the organs so much, like your heart, it will relax your heart so much that your heart will forget to beat, and that's how you die, because there's no oxygen in your body. And when you add it with other substances like alcohol, or the chances of it skyrocket. So don't do it. Okay? You can overdose very quickly, and if you're mixing things up, the chances of an OD are very, 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 very high. कभी भी कुछ भी मिक्स नहीं करना, टू बी ऑन द सेफर साइड, कभी भी कुछ भी मिक्स नहीं करना, चाहे आपको कितना भी कूल दिखने वाला इंसान कुछ भी बोले, मत करना, ठीक है? डॉक्टर कुछ अगर आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, सोच समझ के देंगे, मोस्ट डॉक्टर्स, आजकल कई डॉक्टर्स का भी भरोसा नहीं है, बट कभी भी कुछ मिक्स नहीं करना, बिकॉज वंस माई हार्ट स्टॉप फॉर अ फ्यू सेकेंड्स ड्यूरिंग दिस होल एक्सपेरिमेंटेशन फेज ऑफ माइंड, ठीक है? कभी भी कुछ भी मिक्स नहीं करना, लेकिन मैं कर रही थी, ठीक है? तो मैं बता रही हूँ कि मैं कर रही थी सब मिक्स. Crazy times. There was this time where like my friend, my very good friend, she used to live in Gurgaon, but then she moved to the south because उसके पापा का transfer हो गया था. Her and her little sister visited me for like 4 days or so. They were in the town, and the elder sister came to see me on the first day, and then apparently she left, and then her younger sister stayed for a while. ये सब मुझे सिर्फ इसलिए याद है क्योंकि मेरी गैलरी में फोटोज हैं. उसके अलावा आई हैव नो recollection of when these two sisters came. They stayed with me. My other friend who was giving me the drugs, she also was over. So all four of us are in the house. I have no recollection of any of it, but I have photos. And similarly, I have no recollection of so many people coming in and out of my house. And I'm just so thankful that I was safe. I don't know how safe I was because certain things happened, but like I came out of this alive, man. Thank you so much. I came out of this alive. I love it. But in any case, वो एक महीना heavy use of Xans, and उसके बाद जब मेरी friend को, hey baby, उसके बाद जब मेरी friend को realize होने लगा कि, you know what, once we were doing it and I was so afraid that either I'm gonna die or this girl's gonna die, that I recorded a video on my phone. Every day I would feel like, okay, today's the day one of us will die because of the things we will consume today. So I took a video because I thought if she dies then I should have proof to show to the police. This is so crazy, right guys? क्या सोच रही थी मैं जिंदगी में? But in any case, in that video, I'm telling her something like, hey, तुमको मैं फोर्स तो नहीं कर रही हूँ ना ये सब खाने के लिए? She's like, nope. And I'm like, तुम मुझे फोर्स तो नहीं कर रही हो? She's like, nope. And I was like, okay. And हमें दोनों को पता है repercussions. A video, like the video, something like that. This is crazy. तो in any case, थोड़े टाइम बाद ऐसा होता है कि she stops giving me Xans, मतलब very less, very limited compared to like 3 strip 50-60 जितनी चाहिए. उसके अलावा like हाँ 10-12 ही मिल रही हैं या 18 का एक strip मिल रहा है ऐसा मुझे, ठीक है? So then we shift to this other pill which another friend of ours introduced us to, which I'm not gonna take. क्या हुआ? क्या हुआ? कुलकुल? I'm not going to tell you the name of it because this one you can actually get without a prescription, bro. And it always, like, up until today, like, you can just walk and be like, hey, I want this. And they'll give it to you with no prescription. Baffles my mind. Baffles my mind because
Now this pill is like a muscle relaxant, okay? Not less to do with the bheja, more to do with your body. So like this drugs your body to such an extent. No, actually there is mad euphoria also. Sorry, what did I say? No bheja. There is mad euphoria with this one. Like you feel like you're just grooving. So like I used to, your arm will not feel like your arm, okay? You do this and it'll just go in like your arms gonna melt off. मुझे तो ऐसा लगता था सबसे ज्यादा कि मेरा jaw melt off हो रहा है, इसलिए when I used to be on that, I would like do this a lot, like do that a lot, because it would just feel like I'll be right back. So this muscle relaxant, it's like can you see me? Yeah. It's crazier than a Xan, but it has less restrictions than a Xan. I don't understand it. It's a very popular pill in the States. But yeah, I get on that. And वो तो मैं 2 strips साथ में, okay? Because you also build tolerance, as I've said. You build tolerance for both of this. This is actually prescribed to a lot of old people. And I actually found it at home. And मैंने ले लिया था एक. The one and only thing I ever stole from home. No money, nothing ever. But I stole this strip of pills. Just like 1 or 2 when I went back home later. But crazy. एंड हर दिन मैं ये कर रही हूँ, उसके 2-3 दिन बाद मुझे होश आ रहा है और फिर भी मैं दुखी हूँ, फिर भी मैं रो ही रही हूँ. ऐसा नहीं कि ये सब करके कुछ next day you wake up and there's like fresh light, like it's a fresh breath of air, la 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 la. No, आप धंसते ही जाओगे इसमें. As far as you go, you're only gonna go down this route. अब इसके साथ में साइड बाय साइड एक और चीज हो रही थी. द होल गोल ऑफ मूविंग टू गुड़गांव वाज टू go to the office thrice a week, okay? Now, because first of all, because I made the absolute blunder of not socializing is the wrong word, not acclimatizing, or like not, कुल्फी की मैंने practice नहीं बिठाई थी essentially to stay by herself. So she used to get mad separation anxiety. Because when she was a chinu baby, tab I couldn't leave the room if she would start crying. And then somebody would always be at home until I moved out to Gurgaon. So she was used to somebody always being at home. And she's only like 7 months old at this point. She's still a chotu betu, okay? So it was really hard for me to go to office. Every time I would go to office, she would cry a lot. And I would set up like recording device type stuff so that I could hear like how long she cries. If I was in the office for like 6 hours, she would cry all 6 hours. And it used to hurt me. Like every time I would hear that, it just would hurt the shit out of me, okay? तो मैं ऑफिस 3 दिन जाने के बजाय 1 दिन जाना शुरू कर दिया था. And I've gotten so sad that like during my weekly catch-ups, I'm telling my manager who's in the States that like, hey, I'm really sad. I don't think I'll be able to make it to office this week or something. And she has no problem with it because my job from point A to point B fully is remote. I have no dependencies on anybody in the office. There's no equipment that I need in the office. I'm fully sufficient at home. In fact, I'm doing better when I'm working from home despite all the drugs that I was on, okay? So she has no problem with it. She's like, absolutely, please stay home. You don't need to, like, it's okay. It's fine. Go next week. Go next week. Go next week. And it's chill. Who has a problem with it? Baldy. Okay? तो ऐसा ऐसा चल रहा था. But I was really upset, okay? I was like, no, but मैं इतना बड़ा फैसला लेके घर से आई हूँ. I have to be in the office. And that's the life I envision for Kulfi and I. For me to go to office, her to be okay, and then, I come back home and, like, it's a clean, nice house. Like, ideal world में तो यही था ना. She's in tip-top shape. I'm in tip-top shape. Everybody's happy. Everybody's healthy. Work life is going well. But नहीं हो रहा है. So during this time I also hired like a trainer who eventually became so creepy I had to stop picking up his calls. उसमें भी मेरी गलती थी शायद, क्योंकि पता नहीं, बाद में बताऊंगी कभी ज़िंदगी में. But I like कुछ 15,000 रुपये देके I hired a trainer so that Kulfi can, sorry, I'm disassociating a little bit. मेरे दिमाग में 3-4 चीज़ें चल रही हैं. एक तो वीडियो इतना लंबा हो गया और मैंने सब कवर किया कि नहीं. हाँ, तो ट्रेनर को लेके आई थी मैं
ताकि लाइक कुल्फ़ी थोड़ा अकेले रहना शुरू कर दे, क्योंकि फिर से लाइक यहाँ रहने के बाद मैं इस गुड़गांव वाले घर से निकलती नहीं थी। मैं बहुत कुल्फ़ी को घूमी ले मतलब सुनानी उसने कुल्फ़ी को पे ले जाने की मैंने ट्राई की बहुत ज़्यादा, और मैं लेके जाती थी बीच बीच में, बट बिकॉज इट वॉज नॉट अ गेटेड सोसाइटी, 3-4 बार ऐसा हुआ कि डॉग्स ऑलमोस्ट लाइक स्क्रैच्ड हर, और मैं बचा नहीं पाई क्योंकि वो इतने हट्टे कट्टे से थे ना, ऐसे हरियाणा के कुत्ते थे वो, ठीक है, और ये मेरी छोटी सी नाजुक कली, तो हम कुछ खास कर नहीं पाए। तो उसके बाद फिर मैं उसको लेकर भी नहीं जाती थी, विच इज़ लाइक सो शिटी टू एडमिट, बट इट्स द ट्रूथ। मैं कुल्फ़ी की अच्छी माँ नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। खाना देती थी मैं, रोज़ रोज़ उसके साथ बैठती थी, सुबह मैं अपना सारा काम कुल्फ़ी के पास आके बैठ के करती थी, हम लोग चिपक के रहते थे क्योंकि दिसंबर का टाइम चल रहा था, दिसंबर जान का टाइम था। बट उसकी मैं केयर नहीं कर रही थी, ये मुझे रियलाइज़ हो रहा था धीरे धीरे धीरे। एंड ये सब रियलाइज़ होते होते जैन में मुझे ऐसा लगा कि शी डिज़र्व्स अ लॉट बेटर, सो आई पुट अप दिस अडॉप्शन अपील, ओके, ऑन माई इंस्टाग्राम, बहुत अच्छा खासा एक्सप्लेन करके सबको दैट दिस इज़ द रीज़न आई हैव टू लेट हर गो, एंड ऐसा ऐसा है। बट भगवान की दया है, भगवान थैंक यू सो मच यार, भगवान जी, सॉरी नो, मेरा चिल रहता है, ठीक है, मैं बोल सकती हूँ यार, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उससे, बट थैंक यू सो मच, क्योंकि जितनी भी लीड्स आई, एक तो बहुत कम लीड्स आई, ठीक है, मतलब मैं इतनी लोगों से रीच आउट करी थी, और मैं बहुत ड्रग्ड अप थी, ठीक है, तब जब मैंने वो डिसीजन लिया था कि नहीं नहीं इसको एक बेटर घर मिलना चाहिए, तब मैं ये पॉसिबिलिटी सोच ही नहीं पा रही थी कि मैं बेटर इंसान बन सकती हूँ इसके लिए। मुझे लगता था हाँ मैं तो हूँ ही ऐसी दलदल में धसी हुई इंसान, मैं क्या ही क्या रखूँगी इसका, कोई और आके प्लीज़ बचा लो इसको, दैट वाज माई एक्चुअल थिंग, यू नो, कोई बचा लो इसको। बट फिर इसने मुझे बचा लिया, कुल्फी ने और मेरे माँ बाप ने मिलकर मुझे बचा लिया फॉर रियल, और भगवान भी ऑफ कोर्स। बट कुछ ऐसा होता है कि मुझे बहुत ही कम लीड्स आती हैं, मे बी लाइक 4 लीड्स इन अ मंथ और समथिंग, और एक दो को नोएडा में थे, एक दो को मैंने भेजा भी, पापा देख के आओ कि ये बोल रहे हैं ये करेंगे, एक कोई एक तो शेल्टर है, बट जब भी मैं शेल्टर की फ़ोटोज़ देखती थी, वहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे क्रैम्प्ड बच्चे हैं, छोटे छोटे, सबको डाइल्यूटेड खाना खिला रहे हैं, किसी की कुछ खास केयर नहीं हो रही है, विच इज़ नॉट ऑन द शेल्टर पीपल यार, फंड्स नहीं मिलते हैं लोगों को, ठीक है। और फिर मुझे लगा ये मेरी बच्ची जिसको मैं 3,000 रुपये का कोट पहनाती हूँ और ये 2,000 रुपये के बेड पे सोती है, मैं इसको कैसे दे दूँ किसी को। फिर बीच में एक मेरा कॉलीग भी था, नाम नहीं आता मुझे उनका, बट उन्होंने ऑफ़र किया था कि मैं ना ऐसे स्ट्रे डॉग्स का केयर करता हूँ, तो मैं इसको भी वैसे ही अपने कंपाउंड में छोड़ दूँगा, ऐसे घर के अंदर नहीं रहेगी, बाहर रहेगी। 3-4 घंटे के लिए मैंने वो थॉट एंटरटेन किया, उसके बाद मुझे लगा आई यू सीरियस, ये लड़की रहेगी बाहर, इसको जिसको मैं कंबल उड़ा के एकदम कोजी कोजी करके रखती हूँ, फक नो। तो ऐसा होता गया कि ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ, दिसंबर भर में, नशे तो चल ही रहे हैं भयंकर, बट जनवरी भर में, सॉरी, कि लीड्स आई कुछ कुछ, मोस्टली नहीं आई, क्योंकि शी इज़, एक तो लोग जब अडॉप्ट करते हैं ना, इंडीज़ नहीं करने हमें, हमें चाहिए एकदम हाई क्लास ब्रीड, ठीक है। इंडी अगर चाहिए भी किसी को, जो कि मैंने भी किया था जब मैंने कुल्फ़ी को अडॉप्ट किया था, छोटू पे भी जाते हैं सब, क्योंकि किसी और का पला बड़ा बच्चा या रास्ते का बच्चा वो हमारे रंग में कैसे रंगेगा। अब लेकिन मेरी वो धारणा चेंज हो चुकी है, आई रियली फील लाइक आई एम गोइंग टू अडॉप्ट अ सीनियर डॉग वन डे इन लाइफ, दैट्स द नेक्स्ट dog if I ever adopt, it's gonna be a senior baby or a mid-life baby, I don't know, but like I'm not that puppy wala person anymore. But nobody wanted to adopt her, and the few people that did, they were in such weird conditions that I was like, I cannot give her away. ऐसी थॉट्स में रोज़ रोते 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 नशे करते करते मेरी ज़िंदगी जा रही है। फिर आता है फेबररी, नाउ Feb 10th इज़ माई बर्थडे, एंड आई वॉज लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम लिविंग अलग से घर के बाहर, लेट मी थ्रो अ पार्टी, बट कुल्फ़ी को कैसे लाइक घर पे संभालेंगे, विच इज़ सम डम शिट मैन, क्यों नहीं संभाल सकती थी, थोड़ी देर वो एक्साइटेड होती और फिर उसके बाद काम डाउन हो जाती। बट आई जस्ट, when I keep people away from kulfi, it's not for the people, it's more for kulfi, so that she doesn't get over, but she loves it, she loves it। तो मैं पता नहीं किसको ही सेव कर रही थी, अपना ही हेडेक कम कर रही थी, पता नहीं, या सेल्फिश हो रही थी मैं, बट मैंने ये डिसाइड किया that okay, there are like day boardings, so I found a day boarding with a really high rating in Gurgaon. They come and pick your baby up, or did I drop her? I think I went to drop her, yes. So you drop your kid off, but then they drop off your child, and then
they keep the kid for like 2 days, 3 days, depending on how long you're going. I think I had booked like a 2 day thing, a 2 day thing. And ninth को I think I threw the party. Ninth को रात में I throw a party. I am trashed before anybody shows up. So that's where I was in life. I'm trashed. Okay. But here's a photo of the party. I don't think I talked to anybody in this photo anymore. बट कुल्फ़ी को छोड़ा ही उस दिन सुबह में डे बोर्डिंग में, ठीक है, पार्टी वार्टी कर रहे हैं घर पे बढ़िया. मुझे ख्याल आ रहा है बिकॉज द फर्स्ट टाइम in how many months now? 10 months that Kulfi, not 10, 9 months that Kulfi is away from me. So I'm feeling very anxious, but I'm also partying supposedly. So I'm high and I'm anxious, and it's just a bad feeling. And good feeling, and I don't know what feeling was I even feeling, but Kulfi is there. The next day after the party, I go to my house. घर पे रहती हूँ, मम्मी के साथ थोड़ा सा चिल करती हूँ उस दिन मैं. And then at night I go for this Divine concert with this friend of mine. She, the popular friend, she had extra VIP tickets because she got that creators को नहीं मिलता है passes वो वाला. So I go and I'm enjoying that concert. It's like the third concert of my life. And then next day I come back and I'm feeling, and उस दिन भी concert में, oh my god, I drank so much, I took so many pills that like a lot of your favorite rappers were like took me like crazy. Again, very grateful. This friend of mine, उसके बारे में कुछ भी बोल लो, she's an absolute soldier when it comes to taking care of her friends. At least, is it though? I don't know, but like every time I've been drunk, she has taken care of me, because I've been in situations where I've been like, fuck off, get lost, you know, because I told you not to drink so much. So मेरे से तो better है वो इस department में, I think. Baki, whatever, fuck that shit. But she took, I'm very grateful to her for taking care of me. But I'm fucked that night. I'm fucked that night. But उस दिन फिर मैं जाती हूँ, उसके बाद I go to another party because it was a friend's birthday. But by the time I reach her place, I'm passed the fuck out. Okay, crazy. And then for सुबह, I believe I went directly to my Gurgaon house, or I went back home and then went to my Gurgaon house. Regardless, by 10 a.m. the next morning, I am in my Gurgaon house. And it's time for this day boarding people to drop Kulfi off. And they drop her off. And now, before they drop her off, I'm alone in the house. And the house, as always, is very quiet. And I've done 2 days of crazy drinking, crazy pill popping, crazy everything. Okay? कुल्फी, एंड आई एम फीलिंग लाइक रियली शिट, जो कि हैंगओवर तो होता ही है, बट मेंटली भी मतलब मैंने इतना लो का, आई हैव नेवर अटेम्प्टेड टू ऑफ माई सेल्फ, बट इफ there's any day in my whole life until now that I've come very close to it, that day has to be the day. और मुझे रोना भी नहीं आ रहा है ये सो, बट इट रियली वॉज, बट इट वॉज, या Matlab, I genuinely had to stay in the drawing room because I was like, if I walk into that room of mine, I'm gonna do something. So I don't. तो बहुत ही dark, like it's just wow. I was thinking about it the other day when I was like, okay, ये वीडियो शूट करना है, एंड थोड़ा क्रेजी लगेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई भूत प्रेत के टाइप सा नहीं, ठीक है, डार्क एनर्जी थी मेरे साथ उस दिन उस रूम में. मतलब अगर कोई डिवाइस हम किसी दिन, if we come up with a device to just read people's energy, the color of their thoughts, you know, it would be black. The whole house would be like a black cuboid. I don't know if I can explain it, but I really felt like something dark was there that day. पता नहीं मैं क्या ही contemplate कर रही थी मैं. Maybe I was just really pissed at myself for dropping her off at the day boarding for those 2 days. Or I had just partied so much. And then I was like, was it worth like dropping her off? I don't know. Or like I was still feeling shitty after like seeing Divine देखने गई थी यार. One of my, like I really like him. तो Divine देख के आई हूँ, फिर भी मैं कैसे खुश कैसे नहीं हूँ, अभी मरने का मन कैसे कर रहा है भाई. ऐसे थॉट्स हैं. तो मैं ड्राइंग रूम में सोफे पे लेटी हुई हूँ कि मैं उधर नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, रूम में नहीं जाऊँगी. फिर कुल्फ़ी का ड्रॉप ऑफ करने का टाइम होता है, एंड कुल्फ़ी आती है, एंड शी इज़ covered in vomit, okay, because she has car sickness.
उससे पहले मैं कितना ख्याल रखती थी उस चीज़ का, यू नो, इफ आई एम ड्राइविंग अ कार I'd go real slow, making sure like, and how did I just leave her with strangers who drove recklessly? Why did I trust that they would drive slow? Just because I told them, I did tell them, but like, why would they care? Why would anybody in the world care for your child except you? I felt so foolish and I hated myself so much. Anyway, she comes back. She's like in vomit because she's definitely vomited while they were driving the car, like retards. And उसके बाद मैं उसको somehow, और वो she's like so timid, okay, Kulfi is very expressive but she's so timid. somehow मैं उसको फिफ्थ ऊपर जाना ही नहीं चाह रही, एक जगह पे स्टिल है वो। फिर मैं उसको लेके आई हूँ ऊपर घर पे, फिफ्थ फ्लोर। उसके बाद मैं देखती हूँ, आई अटैच अ फोटो, दिस इज़ द वर्स्ट फोटो एवर, बट आई लुक एट इट टू रिमाइंड माई सेल्फ what rock bottom I have to avoid. She has a scrape on her nose. कुछ नहीं बताया इन लोगों ने मुझे क्या है। और बाकी 2 दिन ये लोग मुझे वीडियोस भेज रहे थे, बिकॉज आई थिंक दैट्स वन रूटीन थिंग दे डू। दे लाइक टेक videos of the kids and keep while they're playing or while they're eating food and sending it to the parents so that uh, you just know what your kid is doing. खेल रहे हैं अभी, चिल कर रहे हैं, सो रहे हैं, whatever. तो उसमें तो वो इतनी मस्त लग रही थी, फुटबॉल से खेल रही है, बट अभी ये क्या है ये? आई वॉज सो मैड। आई सी देयर इज अ स्क्रेप ऑन हर नोज, ओके। अब पता नहीं मुझे कैसे लगी है उसको, गाड़ी में आते आते लाइक विंडो से लगी, या आते वक्त दे वर बीइंग एसहोल्स टू हर तब लगी, या पता नहीं कैसे लगी, बट आई सी दैट एंड आई फ्रीज। अभी भी मैंने, मेरे को बहुत ही अजीब लग रहा है, मतलब लाइक आई फील लाइक माई ब्लड इज solidifying. I don't know how to explain it, but फिर मैंने कुल्फ़ी को वहाँ पे ब्लैंकेट वैंकेट करके बिठाया, सुला दिया वहाँ पे, और फिर मैं भी वहीं पे छोटे से सोफे में उसके साथ कडल करके सो गई। फिर मैं उठी हूँ 2-3 घंटे बाद, एंड आई डोंट नो, डिड आई टेक्स्ट माई फ्रेंड्स दैट आई एम गोना डू समथिंग टू माई सेल्फ, और दे जस्ट शोड अप, मुझे नहीं याद है बिल्कुल भी। बट आई 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 गेट अ कॉल फ्रॉम लाइक दीज 2-3 कॉलीग्स जो कि मेरे फॉर्मर टीम में थे, एंड दे गुड फ्रेंड्स एट दैट पॉइंट एटलीस्ट। दे लाइक, हाँ हम आ रहे हैं तेरे घर, हम लोग ऑफिस आए थे, हम तेरे घर आ रहे हैं। हम लाइक ओके ओके, कूल कूल कूल। सो फिर वो लोग आते हैं, एंड पता नहीं if they can see it in my face or what, but they're like really trying to lighten the mood up. I don't know what happened इसके बीच में, I have no idea, I have no recollection, but they're like trying to lighten the mood up. They're like seeing the house. They were at my house like 2 days ago at the party, but that was at night, so now they're just here, they're just chilling. छत पे गए, फिर ये लोग चले गए 2-3 घंटे के बाद। फिर मैं somehow रूम में गई हूँ कुल्फी के साथ, और फिर उस दिन रात में ना my sister was visiting town. So she was like, okay, I'll go to Shalu's apartment and then I'll come to home, Noida. मुझे सिर्फ इतना याद है दैट शाम में मेरी बहन आती है, and then like a little while later my brother-in-law was going to come, and I just I just knew that if I stay in this house tonight, I will not see tomorrow morning. Like I just knew it, because everything that I was doing to myself and I was going through myself was me. But here Kulfi was, and there's a scrape on her nose, and it's because of me. And I just could not take it. I could not fucking take that shit. It's so hard, bro. I was like, I'm gonna, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अपने आप को भी मार दूँ, इसको भी मार दूँ। इसलिए जब मैं ऐसी न्यूज़ देखती हूँ ना आजकल, वेयर पीपल डू क्रेजी थिंग्स, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट ऑल, लाइक आई रियली एम। एवरीथिंग, एवरीबडी, गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स, mothers, fathers, everybody who does crimes that we consider crimes, I'm able to see like how they arrived at that situation. But in any case, I tell my sister, I think I'm crying by that point, ये भी नहीं याद है मुझे, but I was like, I want to go home. And she for a second I think was like, what? And then she's like, okay okay okay, no problem. And then फिर वो लोग अपनी बड़ी सी गाड़ी में मेरी डॉग को और मुझे लेके नोएडा आए, और कुल्फी ने शायद उल्टी कर भी दी थी, वो मैंने अपने हाथ में पकड़ के फेंका बाहर, मुझे ग्रोस नहीं लगता है बिल्कुल। एंड उसके बाद उस दिन मतलब नो बैग, नथिंग, जस्ट मी, माई फ़ोन एंड कुल्फी। उसके बाद मैं उस घर में कभी नहीं गई।
उस घर का रेंट एग्रीमेंट वगैरह सब फिक्स करवाने एंड लाइक फिक्स नहीं मतलब जो भी कटवा क्या करते हैं रेंट वट एवर, घर छोड़ने, घर पैक करके मूव कराने, क्योंकि मेरा काफ़ी सारा सामान था, मेरा गैस, मेरा सारा कटलरी का सामान, मेरे सारे कपड़े, मेरी बाल्टियाँ, जो सब घर में होता है सब कुछ घर में वैसा का वैसा छोड़ के आ गई मैं। उसके कुछ दिन बाद my father went and he got all my stuff, he packed all of my stuff, he spoke to my landlord, he got everything done, सारा सामान लेके he brought it home because I just could not dare to go back into that house ever. And then life changed forever after I got out of that house. I got out of that black energy. And then life has been a type of way. And I'm grateful for all of it. And I'm going to tell you all exactly how life has been after that. I still continue to use Zans and for like and for like 5 months after I've left, 4 or 5 months after I'm back home in 2023 February. But you'll find out more about it in part 3. कुल्फी को घूमू जाना है अभी, कुल्फी घूमी जाना है, घूमू घूमू जाना है, घूमू जाएंगे, आ जाओ, चलो चलो घूमू, कौन चलेगा, चलो लेट्स गो, घूमू टाइम. Alright, stay tuned for part 3 and don't do drugs. There's nothing cool about it. Come here, come here, come here, Moon Moon. There's nothing cool about it. It's not worth it. Right? Chill chill. Pil pil. Chill chill pil pil. Chill chill pil pil. Chill chill pil pil. Chill chill pil pil. Okay, see you all in part 3.